Good afternoon once again. ये at the moment on my clock it's 2:03 हो चुका है. I think we shall start. Yes, sir. Yes, sir. You can start, sir. Okay. Okay. Yes. So you can meanwhile you can post on your WhatsApp group that I have started, and I hope I'm audible very clearly. And ये वाला जो सेशन होता है पोस्ट लंच काफी टफ होता है. और टिपिकली क्या होता है, बॉडी आपका लंच के बाद थोड़ा लेजी हो जाता है, थोड़ा स्लो हो जाता है. तो ये इसमें अपने आप को जगा के रखना इज सो डिफिकल्ट, स्पेशली अगर ऑनलाइन से ना फ्रेमवर्क में है हम, फिर तो झपकी लगना ही है. तो आप में से बताइए सबसे पहले, कितने लोगों को लगता है कि नेक्स्ट 1 आवर मुझे कोई झपकी नहीं लगेगा? मुझे आदत है, मुझे झपकी नहीं लगेगा. सो यू जस्ट पुट वाई ऑन द चैट बॉक्स. फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. मीनवाइल आई विल शेयर माय स्क्रीन. चलिए, वेरी गुड. देखिए, मुझे नहीं लगने वाला बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक. तो मुझे तो सवाल ही नहीं होता है. तो आप में से कितनों को लगता है कि झपकी नहीं लगेगा? वेरी गुड. चलिए, गुड. ऑल राइट. तो जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एआई टूल्स फॉर टीचिंग एंड रिसर्च. बट आपकी जो ब्रोशर है उसमें लिखा हुआ है एआई टूल्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी. ऑफ कोर्स अगर हम उसको टीचिंग में या रिसर्च में यूज करेंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू एनहांस एफिशिएंसी. बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट हैव अ लुक एट चैट विंडो. अरे वाह, सबने यस लिखा है. चलो, आई एम थैंकफुल कि कुछ लोग तो कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं लगेगा जबकि. एनीवे, सो सबसे पहले आई मेक इट एज फुल स्लाइड. चलिए, आई होप आपको स्लाइड क्लियरली दिख रहा हो. तो आप क्या बता सकते हैं मुझे, व्हाट काइंड ऑफ एआई टूल्स यू यूज फॉर योर ऑफिशियल और पर्सनल टास्क? एक तो चैट जीपीटी सब यूज करते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको हम देखेंगे. और बाकी क्या टूल्स आपने यूज किया है, एआई टूल्स? जेमिनी, यस, वेरी गुड. बाकी सोचिए, और किस तरह के एआई टूल्स हैं जो कि आप ने यूज किया है? ठीक है, अलेक्सा, यस. कैनवा, ठीक है. और सोचिए. ओके, चैट जीपीटी तो है ही. गैमा, ओके. अदर्स? ओके. जूम को हम एआई ऐसे नहीं बोल सकते हैं, तब बोलते हैं जब इसका जो मीटिंग एंड ऑल दैट वो आराम से क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड करके, और वो मिनट. चलिए, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया, एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड ऑल दैट जब आ जाता है तब. जेनी एआई, गुड, वंडरफुल, यस. चलिए, आप लोगों ने काफी सारे एआई टूल्स यूज किए हैं और अपने टास्क के लिए. और वो किस किस टास्क के लिए किए होंगे? आपने ऑफिस वर्क के लिए किया होगा, टीचिंग के लिए किया होगा, असेसमेंट के लिए किया होगा, रिसर्च के लिए होगा, और एनी अदर टास्क के लिए किया होगा. ठीक है. तो चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एआई की डायनामिक्स को समझते हैं. जो हम एआई बोलते हैं वो है क्या, ये मैटर है क्या, कैसा है, थोड़ा उसको समझते हैं. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है, जो ब्रॉड लेवल पे बोलते हैं, इट इज नथिंग बट एआई इन्वॉल्व्स टेक्निक्स दैट इक्विप कंप्यूटर्स टू इमुलेट, दैट कंप्यूटर्स मतलब मशीन्स, टू इमुलेट ह्यूमन बिहेवियर, enable them to learn, make decision, recognize pattern and solve complex problem in a manner similar to human. तो ये है बड़ा बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप डेफिनेशन बोल. उसका जब एक छोटा सबसेट, एक लेयर आ जाता है जिसमें कि आप यू स्टार्ट having advanced algorithm based on large data, तो उसको हम बोलते हैं मशीन लर्निंग. उसके और रिफाइंड सबसेट हो जाता है डीप लर्निंग, जिसमें कि आप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं, इन डेप्थ डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिकल टास्क काफी सारा यूज करते हैं, तो वो हो जाता है डीप लर्निंग. उसका और एक रिफाइंड वर्जन हो जाता है जेनेटिव एआई, जो कि हम अभी हम एआई बोलते हैं तो इट इज मोर लाइक
फॉर ए कॉमन पर्सन इट इज मोर लाइक जनरेटिव एआई। जो हम जितने भी लिख रहे हैं, कौन से एआई टूल्स मान लीजिए, तो ज्यादातर हम जो लिख रहे थे दोज आर मोस्टली कॉल्ड एज जनरेटिव एआई, लाइक चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा, बिंग, ये सारे। ठीक है, ऑल राइट। तो इसके एप्लीकेशंस, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन एजुकेशन? इसके एप्लीकेशंस पर्सनलाइज्ड लर्निंग करवा सकता है, जैसे आपने देखा होगा खान एकेडमी, स्वयं, एनपीटीएल, ये सब प्लेटफॉर्म। इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग कर सकता है, कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, जैसे बाइजू करता था, मान लीजिए अभी भी है, करता है, बट बाइजू की हालत बहुत खराब है। तो आ, और क्या, ऑटोमेटेड असेसमेंट एंड फीडबैक, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऑटोमेटेड असेसमेंट अभी तक हमारे इंडिया में इतना ज्यादा आया नहीं है, बट ये आएगा। सो सम ऑफ द फॉरेन यूनिवर्सिटीज व्हाट दे आर डूइंग, ये जो आंसर स्क्रिप्ट्स होते हैं, वो लोग इसको क्या कर रहे हैं ना, इसको फोटो लेके एआई को बोल रहे हैं, लाइक चैट जीपीटी को, कि आप इसको चेक करो। चेक करने के बाद वो ह्यूमन को भी बोल रहे हैं आप इसको करेक्ट करो, और दोनों में से वो देख रहे हैं कंपेयर। तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज में ये एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी ऐसे तो नहीं चेक कर पाएगा। चैट जीपीटी विल चेक ऑन द बेसिस ऑफ सम rubric. I hope you know what is rubric. I'm not getting into it. Rubric is nothing but uh, a process or a table or a system to for evaluation. एक बच्चे ने ये लिखा तो गुड, ये लिखा तो वेरी गुड, ये लिखा तो एक्सीलेंट, समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड एज रुब्रिक। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, यू विल गेट लॉट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर रुब्रिक। तो वो रुब्रिक एआई को देने के बाद एआई किस तरह से इवेलुएट करता है, ह्यूमन किस तरह से इवेलुएट करता है। तो काफी सारे यूनिवर्सिटीज कॉन्फ्रेंसेस मैंने जो अभी रिसेंटली अटेंड किए हैं, उसमें से एक रिसर्चर ने प्रेजेंट किया दैट 90% एक्यूरेसी जो ह्यूमन चेक कर रहा है पेपर, विथ 90% मैचिंग एआई चेक कर रहा है। तो आप सोचिए, हमारा एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि पेपर इवेलुएट करना, और जिसका बैच ज्यादा होता है, लाइक मेरा बैच साइज, जो मैं जिस बैच को मैं पढ़ाता हूँ, ऑलमोस्ट 200, 180 200 है। तो उनके पेपर्स इतने सारे चेक करने, एक मेंटल फटीग, एक मेंटल, मतलब वो चैलेंज हमारे पास आ जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए क्या एआई कुछ कर सकता है? तो ऑटोमेट की बात चल रही है, कुछ कुछ ऑटोमेशंस हो रहे हैं, और इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा। लर्निंग एनालिटिक्स, फोर्थ पॉइंट, काफी इंटरेस्टिंग है। आप में से कई लोग जानते होंगे, देर इज अ एलएमएस कॉल्ड एज मूडल, बहुत फेमस है। तो मूडल में अगर आपने मान लीजिए कुछ लर्निंग मटेरियल डाला, सो यू एज एन इंस्ट्रक्टर विल बी एबल टू सी कि किसने, बच्चे ने कब देखा, कितना देर देखा, एंड ऑल दैट। सो लर्निंग एनालिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, वेयर यू गेट टू नो कि स्टूडेंट का एंगेजमेंट किस लेवल पे है, वेदर दे आर एंगेज्ड, नाइसली एंगेज्ड, नॉट नाइसली एंगेज्ड, जो भी है, जैसा भी है। तो ये है। अच्छा, इसकी ये तो हो गए एप्लीकेशंस। बेनिफिट्स क्या होंगे? ऑफ कोर्स एनहांस एंगेजमेंट, जो हम बात कर रहे हैं, पर्सनलाइज लर्निंग पाथवे बना लेगा, जो स्लो लर्नर, एडवांस लर्नर, वो अपने हिसाब से सीख पाएगा थ्रू एआई। रियल टाइम फीडबैक मिलेगा उसको, और डेटा ड्रिवन इंसाइट मिलेगा। चैलेंजेस ऑफ एआई इन एजुकेशन, क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे पहला जो चैलेंज है वो बड़ा सीरियस है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो कोई मुझे इस पॉइंट को इलैबोरेट करके बताएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, व्हाई इट इज अ चैलेंज? Anybody can just unmute and say. जो भी आपके, आपको, आई एम श्योर आपने सुना होगा ये टर्म डेटा प्राइवेसी का, तो इसको हम चैलेंज क्यों बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है आप लोग awake हैं। Hello, sir. Good afternoon. हेलो, गुड आफ्टरनून। यस हाँ, मैम। हाँ sir, मैम। if we are using AI for diagnosis purpose, that हाँ time you are taking some data from the patient, हाँ, and बिल्कुल मैम। that time there is a challenge to keep that data to be private or confidential. बिल्कुल 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 बिल्कुल, Okay? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये तो एक बहुत, मेडिकल साइंस में तो मैम दिस इज लाइक अ वेरी सीरियस कंसर्न, यू फ्लैग्ड इट वेरी नाइसली। इसके दो लेयर्स हैं मैम। एक लेयर ये होगा कि जब हम अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी एआई, जैसे हमने एड पजल सीखा या कुछ, तो हम अपने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अपना दे रहे हैं ना पर्सनली।
तो वो डेटा कौन किसको कैसे यूज कर रहा है वी डोंट नो, वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, जब हम प्लेटफॉर्म में जाके जो भी करते हैं वॉट एवर वी डू, जैसे मैम ने बोला मेडिकल, आप एक्सरे करवा रहे हैं, अभी बहुत वाइडली ये चल रहा है कि एक्सरे को ऑटोमेट किया जा रहा है कि एआई आपका एक्सरे पढ़ के रिजल्ट दे देगा। बट वो जो प्लेटफॉर्म है, एआई प्लेटफॉर्म जो एक्सरे पढ़ रहा है, अभी वो आगे इसका क्या कर रहा है यू नेवर नो, है ना। तो ये, या फिर आपका कोई भी डायग्नोसिस, कोई भी रिपोर्ट आप मेडिकल या कोई और जो भी आप सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा कौन कैसे यूज कर रहा है यू नेवर नो। तो ये डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न एंड इट विल बी मेजर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। काफी सेंसिटिव मैटर है। एल्गोरिथमिक बाइस, चलिए अभी हमको सविता मैम ने बोल दिया डेटा प्राइवेसी का, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया। एल्गोरिथमिक बाइस कौन बोलेगा? एनीबडी, जो भी आपके मन में आपको लगता है दिस इज समथिंग इज एल्गोरिथमिक बाइस। So is it possible for you to explain what is algorithmic bias? So suppose we are searching something on Google, for example, or through AI. So they will show the result from particular website or particular source only. बिल्कुल So that I think that is a bias. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, यू आर स्पॉट ऑन। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, सर ने बोल ही दिया है। मान लीजिए मैं अभी एआई को बोल रहा हूँ मुझे कल का टॉप 10 न्यूज बोलो, ठीक है। अभी वो एआई में ऐसा एल्गोरिदम लिखा है कि वो खाली टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज देख के आपको बोल देगा, तो ये बायसनेस हो गया। क्यों? देयर आर मेनी मोर न्यूज़पेपर एजेंसीज विच कैन गिव यू, तो उसने कहाँ से टाइम्स ऑफ इंडिया का टॉप 10 निकाल के दे दिया, तो एल्गोरिथमिक बाइस हो गया। मान लीजिए मैंने एआई को बोला कि मुझे एक पैराग्राफ लिख के दो कुछ, और वो यूएस इंग्लिश में लिख रहा है। वो क्यों लिख रहा है? मैं तो इंडियन हूं, है ना। तो हर एआई प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ एल्गोरिदम रहता है। वो एल्गोरिदम किस तरह से लिखा गया है, उसमें बायसनेस है कि नहीं है, वो देखना बहुत जरूरी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रोल, टीचर्स रोल एंड इंटीग्रेशन, ये कौन बोलेगा मुझे? व्हाट डू यू थिंक, ये चैलेंज क्यों है, रोल ऑफ टीचर या फिर टीचर्स रोल एंड इंटीग्रेशन? चलिए इसका मैं ही बोल देता हूँ। आपको अभी तो पक्का भरोसा है कि ये जो स्क्रीन में जो बोल रहा है कृष्णकांत रॉय, वो ह्यूमन है ना। 10 साल बाद ये भरोसा रहेगा आपको कि जो आपके सामने बोल रहा है वो ह्यूमन है या फिर कंप्यूटर है या मशीन है? सोचिए। शायद ऐसा ही कोई चैटबॉट होगा और वो बोल रहा होगा, राइट। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन फ्यूचर, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट रोल ऑफ टीचर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। एंड सम ऑफ द व्हाट आई कैन एंटिसिपेट इज सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज और schools, private schools or universities will try to bring some kind of human teacher. अभी मैम ने, किसी ने बोला था एलेक्सा, तो एलेक्सा क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो जिसके साथ आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, है ना। तो स्कूल में भी ये लोग ला सकते हैं। यस ऑफ कोर्स ह्यूमन टच इज रिक्वायर्ड, उसके बिना चलेगा नहीं स्कूल या कॉलेज। बट अगर ऐसा कोई चैटबॉट आपने रख दिया जो कि आंसर है, उसको उसको ऐसे एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है कि वो माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपर्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, कॉमर्स में, वो तो सब जानता है। उसको जस्ट पूछो, वो पढ़ा देगा, कोई कंट्रोल करेगा। तो एक वन टीचर कैन वन और वन एडमिनिस्ट्रेटर कैन कंट्रोल 5 क्लासेस। सोच के देखिए। दिस इज व्हाट आई कैन फोरसी, मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है जो मैंने आपको बताया? चैट पे वाई या एन लिखिए इन इन नेक्स्ट, और अगर हो सकता है वाई के साथ में ये भी लिख दीजिए कितने साल में आपको लग रहा है ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। कॉलेज में कुछ चैटबॉट्स आ रहे हैं जो कि टीचर के फॉर्म में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इट विल नॉट रिप्लेस द एंटायर टीचर fraternity, but some, at least some it can replace. तो चैट में प्लीज वाई या एन डालिए। Yes, I can see only 4 5 active participants.
अच्छा, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर को अगर अटेंडेंस लेने बोलूं, आप सब ऐसे ही करेंगे या फिर आप रिप्लाई करेंगे? आई मे रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स टू टेक एन अटेंडेंस एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज नेक्स्ट जो मैं दिखाने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो आप मिस आउट कर जाओगे। सो कैन वी हैव अटेंडेंस नाउ, और हम बाद में लें, इस सेशन के बाद लें? After the session schedule, sir, we can take. अच्छा, ठीक ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एनीवे, तो जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, एटलीस्ट इवन इफ इट इज 2025, दैट्स फाइन। बट आप देखिए कुछ किस लेवल पे हम एआई टूल्स यूज करने वाले हैं नेक्स्ट 1 आवर। अच्छा, और एक मुद्दा आता है एक्सेस एंड इक्विटी। देर आर अराउंड 50% ऑफ द स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स की बात मैं कर रहा हूँ, अराउंड 50% ऑफ द स्कूल्स डोंट हैव कंप्यूटर विद इंटरनेट। टोटल जो हमारे पास इंटरनेट इन स्कूल्स है वो करीब 50% है। तो मान लीजिए 50% ऑफ द स्कूल्स हैव कंप्यूटर एंड इंटरनेट, और बाकी आधा स्कूल्स के पास तो है ही नहीं, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। क्या एआई का रोल है? क्या इक्विटी की बात कर रहे हैं? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, गोल 4? आधे लोगों के पास इंटरनेट नहीं है ना? आप सोच के देखिए, ये सारे सीरियस कंसर्न है। वी वी ऑल आर सो प्रिविलेज, हमारे पास इंटरनेट है, डिवाइस है, हम सुन सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आधे लोगों के पास तो है ही नहीं। वो तो पेपर में बड़ा अच्छा लगता है, SDG 4, हाँ इक्विटेबल ये करेंगे वो करेंगे, बट रियलिटी में तो बड़ा टफ है करना, स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया। पॉपुलेशन इज ह्यूज, डाइवर्स। तो उसमें हम बात कर रहे हैं एआई की। इनफैक्ट वो भी बोल रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स आर आल्सो सेइंग दैट एआई कैन हेल्प यू टू ब्रिज द गैप, इट विल ब्रिंग इक्विटी, बट हाउ? इफ यू डोंट हैव डिवाइसेस, हाउ डू यू ब्रिंग इक्विटी? ठीक है, इसको सोचिए, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसको लेके अगर हम डिबेट करने लगे तो 1-2 घंटा हम सोच सकते हैं, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक। चलिए, सो नाउ ये फ्यूचर एआई का हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ इसमें लिखे हुए हैं कि एआई पावर टीचर्स होंगे, एनालिटिक्स को ज्यादा यूज किया जाएगा, इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम आ जाएगा, असेसमेंट में आएगा काफी सारी। ठीक है, ये आप खुद सोचिए कि क्या हो सकता है, कॉन्शियसली सोचिए, माइंडफुली सोचिए। ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, हाउ इट इज गोइंग टू शेप, how it is going to shape the future of your future, your students future, entire college schools का future क्या होगा, ये आप सोचिए। ठीक है, चलिए, अभी मुझे आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि क्या हम अभी अटेंडेंस लें। अभी आपको मुझे बोलना पड़ेगा। टिपिकली मैं आपको बताता हूँ, एआई का जो सेशन होता है, मैं एक पूरा दिन बोलता हूँ एआई को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अभी हमारे पास 1.5 आवर्स है खाली एक्सप्लोर करने के लिए। तो rather देन मी स्टेटिंग कि मैं ये दिखाता हूं, आप मुझे बोलिए कि आप क्या देखना चाहते हैं। सो बेसिकली, अगर आप मुझे बोले कि व्हाट चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स यू एज ए टीचर फेस विद द राइज ऑफ एआई इन एजुकेशन, तो मैं फिर दिखाऊंगा कि उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, कौन सा एआई टूल लेके आए। पहले चैलेंजेस बोलिए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या आप देखना चाहते हैं, वो बोलिए। सो चैट विंडो में यू कैन थिंक फॉर ए मिनट और सो, एंड देन यू कैन टेल मी कि ये सारे चैलेंजेस आप ऐसा कुछ दिखा सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या। तो देन आई ट्राई टू शो। अगर बहुत सारे चैट आ गए तो मैं फिर पिक करूंगा वहां से जो सबके लिए जरूरत है, या फिर कुछ चैट आए, मुझे लग रहा है ज्यादा चैट नहीं आएंगे, तो अगर कम चैट है तो फिर सर आप चैट में ये लिखिए कि मुझे लेक्चर नोट बनाने में दिक्कत होता है, क्या आप एआई से लेक्चर नोट बनाओगे? मुझे पीपीटी बनाने को नहीं जमता है, बहुत टाइम लगता है, आप क्या पीपीटी बना के दिखा सकते हो? मुझे इमेज ऐसे। सो आप जो लिख रहे हैं वो बहुत ही ब्रॉड है, कंप्यूटर लिटरेसी में क्या दिखाऊं मैं आपको, एआई में अंडरस्टैंडिंग में मैं आपको क्या दिखाऊं? तो इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कीजिए, एंड देन यू कैन टेल मी कि आप, ये चैलेंजेस है। यस, ऑफ कोर्स आई अग्री, जो आपका ट्रेनिंग एंड फीजिबिलिटी, दैट्स अ चैलेंज। अभी अंडरस्टैंडिंग में इज ऑल्सो चैलेंज की, लेकिन मुझे ये समझने की जरूरत है आप किस लेवल का अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं। हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ द डेटा प्रोवाइड बाय एआई, ठीक है, इन स्पेशल इन मैथ्स, गुड,
क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की, गुड। चलिए 2 आया, दिखाए। आप बोलते रहिए, मैं दिखाऊंगा। हाउ टू मेक शॉर्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मैंने, ठीक है, ये रिसर्च में कवर करेंगे। और भी थोड़ा वेट करते हैं, एंड देन बाकी आप सोचिए कि व्हाट एरियाज यू आर इंटरेस्टेड इन, एंड देन आई विल शो यू। डेटा इंटीग्रिटी, वैलिडिटी, प्लेजरिज्म, ओके, दैट्स गुड पॉइंट। कॉपीराइट, फाइन। या ये एक चैलेंज तो है सर, इट विल अफेक्ट द जॉब मार्केट। ये जॉब मार्केट के डायनेमिक्स को थोड़ा चेंज करेगा डेफिनेटली। कोडिंग वोडिंग अभी देखिए ना, वो खुद करके दे रहा है। यस, आई एग्री विथ यू। एथिकल एस्पेक्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक चैलेंज है। वो जो उससे लिखवाएगा और बोलेगा मैंने लिखा है है ना। पेपर इवैल्यूएशन और आंसर किया, अच्छा ठीक है, इस एरिया में वीडियोस की तरह। अच्छा, इसको टीचिंग प्रोसेस में कैसे यूज करें, वेरी रेलिवेंट। ठीक है, चलिए। तो ये सारे तो आपके हो गए। कुछ कुछ तो मैंने अभी क्या किया, एक फ्रेमवर्क बनाया। ये मैंने 3-4 दिन पहले ये फ्रेमवर्क बनाया। सो आप इस फ्रेमवर्क को समझिए, एंड देन विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग टूल्स। इस फ्रेमवर्क में मान लीजिए यूर इंटर 2 एंटिटीज आर इंटरैक्टिंग। अभी मान लीजिए 2 एंटिटी है, एक हो गया एआई, एक हो गया ह्यूमन। इन दोनों का इंटरेक्शन, मैं इसको फोन को एआई बोल रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। ह्यूमन है और एआई है। अब जो ह्यूमन है, मैं ह्यूमन को बोल रहा हूँ ऑन ए ब्रॉडर लेवल, एवरेज लेवल, मेरा इंटेलिजेंस एवरेज लेवल का, मैं सुपर इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं एवरेज लेवल का ह्यूमन। और ये एआई है, एआई का आपको पता है ये पावर या फिर क्या है, ठीक है। अब इसके ह्यूमन एआई इंटरेक्शन में 3 सिनेरियो बनते हैं। पहला केस, पहला सिनेरियो, ह्यूमन अपना दिमाग नहीं लड़ा रहा है, ह्यूमन सब कुछ एआई को बोल रहा है करने के लिए, जैसे कि डू दिस, डू दैट, डू दिस, डू दैट, ये सब। तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो पुअर होगा। कोई कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगा ह्यूमन का, ह्यूमन का लर्निंग नहीं होगा, ह्यूमन के, आप लोगों ने ये भी बताया, एथिकल कंसर्न्स होंगे, और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये पहला केस। दूसरा केस, ह्यूमन अपना सब कुछ कर रहा है, अपने तरफ से ही कर रहा है, पेपर भी बना रहा है, पेपर चेकिंग कर रहा है, सब कुछ, लेक्चर नोट्स बना रहा है, पीपीटी बना रहा है, सब कुछ वो अपने कर रहा है, वो एआई को यूज नहीं कर रहा है। इट इज स्टिल बेटर देन द प्रीवियस केस, कि एटलीस्ट उसका कॉग्निटिव लेवल ठीक रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, उसे कॉन्शियसली पता है वो क्या कर रहा है। एफिशिएंसी में भी रिलेटिवली मॉडरेट होगा क्योंकि वो एवरेज है, प्रोडक्टिविटी भी मॉडरेट। थर्ड सिनेरियो, ह्यूमन प्लस एआई दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी बेस्ट। वो मल्टीटास्किंग कर पाएगा। जो जो टास्क आपके लाइफ में भी, आप खुद सोचिए एज ए टीचर, बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसको कि ज्यादा दिमाग नहीं लगता, वो खाली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए होता है, वो खाली प्रोसीड्यूरल होता है, मैकेनिकल होता है। तो ऐसे टास्क को क्या आप ऑटोमेट करना चाहेंगे, क्या एआई को बोलेंगे करने के लिए? ऑफ कोर्स यस, आप किसी को भी पूछिए, सब बोलेगा यस, ऐसे टास्क को मैं करूंगा। एंड आई विल स्पेंड मोर टाइम इन क्रिएटिव वर्क, कि मैं ये सोचूंगा ज्यादा what kind of lecture delivery or lecture material I should create so that it become very interesting, creative, बच्चा सीख जाए, है ना। मीनिंगफुल एक्टिविटीज में वो ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो आप अगर कोई इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करें, ह्यूमन प्लस एआई, दैट इज द बेस्ट सिनेरियो आज के जमाने में। अग्री? चलिए, मूविंग ऑन। अभी हम लोग सब यूजफुल सम यूजफुल टूल्स दिखाते हैं। तो एक टीचर, मुझे आप बताइए, कोई भी अनम्यूट करके बताइए, आप एज ए टीचर आप क्या क्या अलग अलग टास्क करते हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग? एक तो हो गया टीचिंग, और क्या करते हैं? यू कैन यूज द चैट विंडो और यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी, टीचिंग के अलावा क्या करते हैं? नोट मेकिंग, सर ये टीचिंग का ही पार्ट हो गया। यस, टीचिंग के अलावा रिसर्च हो गया। ललित कुमार सर ने वेरी क्लियरली बोल दिया, टीचिंग एक एस्पेक्ट हो गया,
रिसर्च और एक दो एस्पेक्ट हो गए, और क्या करते हैं? विजिट टू गार्डन। सर ये कोई एक्टिविटी नहीं हो गया, विजिट टू ऐसे गार्डन, आप ये भी अगर आप पढ़ा रहे हैं कुछ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टीचिंग। और अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहिए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा विजिट टू गार्डन आपने क्यों लिखा, तो आप हमें एलैबोरेट कर सकते हैं। कंडक्ट एक्टिविटीज, यस, एक्टिविटीज इन द सेंस लॉट ऑफ इवेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट या फिर एक्टिविटीज हमें करने रहते हैं। कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यस, कंप्लीटली अग्री। हाँ, पोएम राइटिंग आप कर सकते हो, यस। इंडस्ट्रियल विजिट, ई बुक क्रिएशन। तो अगर मैं देखूं 4-5 बास्केट में इसको, या 3-4 बास्केट में इसको डाल सकता हूँ। एक हो गया ब्रॉडली टीचिंग, टीचिंग में इवैल्यूएशंस भी आ जाएगा टीचिंग लर्निंग में। दूसरा हो गया रिसर्च, और तीसरा हो गया एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा एडमिन काम, इवेंट करना, ये करना, वो करना, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सब आ जाता है हमारे टीचिंग। तीन तीन हिस्सों में हम इसको ब्रॉडली बांट सकते हैं, टीचिंग लर्निंग, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग में सबसे ज्यादा टूल्स जो हम यूज करते हैं, और या फिर टीचिंग लर्निंग में इफ यू सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स यू डू टीचिंग लर्निंग में। टेक्स्ट क्रिएट करते हो आप, इमेज क्रिएट करते हो, वीडियो क्रिएट करते हो, मे बी सिमुलेशन और कुछ एग्जाम्पल्स, ये सब क्रिएट करते हो। तो ये प्राइमरीली यू डू। या फिर आप टेक्स्ट क्रिएट नहीं करते हो, आप जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है या बुक है उसी को यूज करते हो, या एग्जिस्टिंग इमेज है उसको यूज करते हो, या वीडियो जो भी है उसको यूज करते हो। बट अगर आपको क्रिएट करना चाहे ये सब, तो आपके पास बहुत कुछ है। तो मैं आपको एक एडवांस टूल अभी डिस्प्ले करता हूं कि किस तरह से आप खुद सीख सकते हो, और आप उसको वॉच कीजिए। सो 10 मिनट्स, 10 मिनट्स यू जस्ट वॉच व्हाट आई डू विथ सम एडवांस टूल्स। उसके बाद आपके जो क्वेरीज आए थे उसको लेके मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग चीज। सो ठीक है, चलिए मैं आपको अभी, आई होप एवरीवन इज एबल टू सी माय स्क्रीन। Yes, sir. ओके, जस्ट सी व्हाट आई डू। हाँ, हाय, हाय, आर यू देयर? Yes, I'm here. How can I help you today? ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। Of course. Take your time. आपको सुनाई दिया क्या? Yes, sir. So next 5 to 10 minutes I'll interact with AI and then see what happens. ठीक है, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेरीज लूंगा और आपको अलग अलग टूल्स देता हूँ। All right, so hope you're doing fine. I'm doing great. Thank you. How about you? I'm also doing great. At the moment, I'm taking a session on AI, how we can use AI in teaching and learning process. That sounds exciting. How's the session going so far? It's going well, although it's online. Not many people are reacting, but those who are reacting, they are wonderfully, they are contributing wonderfully. So I'm really happy. That's wonderful to hear. Even a few engaged participants can make a big difference. Keep up the great work. Okay, now I want your help. So can you tell me what are the best strategies for teaching well? Basically, I want to teach well. I want to become a very good teacher. So can you tell me some strategies? Absolutely. Here are a few strategies. First, know your students and their needs to tailor your teaching methods accordingly. Second, keep lessons engaging with interactive activities and real-world examples. Third, foster an inclusive environment where every student feels valued. And lastly, continually seek feedback. You're welcome. If you have any other questions, feel free to ask. All right. So, many of my audience are Hindi speaking. So is it possible to interact with you in Hindi? बिल्कुल, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। आपको जो भी सहायता चाहिए, बताएं। अच्छा, आप मुझे ये बोलिए कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या टेक्निक बताइए जिसको कि हम बच्चों को पढ़ाते वक्त यूज कर सकते हैं क्लासरूम सेटअप में।
जरूर। एक बढ़िया तकनीक है इंटरैक्टिव लर्निंग। इसमें आप एंगेजिंग टूल्स जैसे स्मार्ट बोर्ड्स, एजुकेशनल एप्स और ऑनलाइन क्विजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और सीखने में मजा आता है। ओके। अच्छा, आप मराठी में कुछ मराठी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। आप मराठी टीचर्स को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से वो अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाएं इन मराठी? नक्कीच. मराठी शिक्षकांसाठी काही सल्ले. सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांच्या अनुभवांशी जोडलेल्या उदाहरणांचा वापर करा. दुसरं, स्थानिक साहित्य आणि संस्कृतीचा समावेश करा. तिसरं, प्रश्नोत्तरांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना विचार करायला प्रवृत्त करा. आणि शेवटी तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून शिकवणी अधिक इंटरॅक्टिव्ह करा. Oh, that's really cool. Wonderful. So, is it possible for you to teach me Bhagavad Gita? I can certainly share some insights and explanations from the Bhagavad Gita. What specific topics or verses are you interested in? Currently, I am learning chapter number 13. And in chapter number 13, Lord Krishna said about 20 practices. Can you tell me quickly what are those practices? Sure. In chapter 13 of the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes 20 qualities or practices for spiritual growth. Some of these include humility, nonviolence, patience, honesty, self-control, and detachment. Each of these qualities helps in achieving a deeper understanding of the self and the ultimate reality. If you need more details on any specific practice, feel free to ask. Oh, that's really great. You know what? One of our participant asked that how can I make an interactive video? So could you please give your inputs that how can I make a video very interactive and interesting for students? To make your videos interactive and interesting, try these tips. Incorporate quizzes or questions at different points to engage students. Use visuals like animations or infographics, and include real-life examples or scenarios to make content relatable. Also, encourage students to comment or ask questions, fostering a sense of interaction even if it's a recorded video. Oh, that's wonderful. Thank you so much for giving me all these diverse answers. I'm really thankful to you. You're very welcome. I'm glad I could help. If you need anything else, just let me know. All right. I hope you have listened to my conversation with AI. और आपने एक Yes. छोटा सा आपको आइडिया आया होगा कि ये किस रेंज में मेरे साथ बात कर सकता है। Actually, yes. और मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आप चैट विंडो में अगर आपने कुछ टफ क्वेरियां डालिए, मैं आपके सामने लाइव डिस्प्ले दिखाऊंगा कि वो क्या आपको बोलता है। So if anything that you want me to ask AI, just type in the chat window or unmute and tell me now. I'll wait for 1 minute and then if I get something interesting, मैं AI को पूछता हूँ वो बोलने के, जो आपको लगता है कि वो शायद बोल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, something like that. Hi, you there? Yes, I'm here. How can I assist you further? Yeah. So I want to ask, what's the future of space microbiology? Can you explain in, let's say, 200 words? Sure. Space microbiology explores how microorganisms behave in space. It's vital for ensuring astronaut health, understanding potential extraterrestrial life, and developing new biotechnologies. Future research focuses on how microgravity affects microbes, their role in closed habitats, and their potential for biomanufacturing in space. This field is key for long-term space missions and understanding life's adaptability beyond Earth. All right. Thank you. Okay. अभी You're ये जो welcome. If अभी you ये have any more questions, feel free to ask. अभी ये जो मनीष सर ने लिखा है, that's a tricky one. I suspect कि वो उसमें कुछ बोलेगा क्योंकि एल्गोरिदम लगा हुआ है। मैंने इसको पूछा नहीं है। सर ने क्या पूछा, आप सब ये देखिए। हाँ, सर ने पूछा व्हाट वुड बी प्रेसिडेंट टर्म्स नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। ये प्रेसिडेंट टर्म आता है ना तो ये सेंसिटिव हो जाएगा, तो ये बोलेगा नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि वो इसको डॉज करेगा। लेट्स सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मनीष सर। आई आस्क। ठीक है। ऑलराइट। हाय, आर यू देयर?
Yes, I'm here. How can I help you today? I have a question. It would be great if you answer that. Of course. What's your question? Okay, the question is, what would be President Trump's next strategy? It's hard to say for sure since I can't predict the future. Yeah, Typically, yes, I anticipated that. Thanks. Thank you very much. you're welcome. If there's anything else, just let me know. मनीष सर, आपने देखा? Yes, that's why I asked you to go. I knew that. Anticipated है सर. अभी AI यूज करते करते इतना मेरे को पता लग गया है कि वो कौन Yes, सा क्वेश्चन डॉज करेगा और कौन सा definitely. क्वेश्चन आपको देगा. तो द Yes, मोमेंट आप उनकी स्ट्रेटजीज के बारे में पूछोगे, दैट्स अ वेरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अगर AI कुछ बोल देता है, इट कैन फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ एल्गोरिथमिक बायस, और वो क्या बोलेगा, ओपन AI को इसको शट कर दो, बंद कर दो. तो ये नहीं बोलेगा वो डेफिनेटली, बट बहुत कुछ बोलेगा, आपको पता लग गया है. अभी एक चैट में ये आया है कि कैन AI रिप्लेस टीचर्स. देखिए, इसके बहुत अलग अलग लेयर्स के आंसर है. मुझे ऐसा लगता है, इन माय ओपिनियन, दैट AI will definitely come into the process of teaching learning. वो आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते हो. कंप्लीटली रिप्लेसमेंट नहीं होगा मेरे ख्याल से, कुछ रिप्लेसमेंट होगा. तो मुझे ऐसा लगता है द टीचर्स हु आर लेस एफिशिएंट प्रोबेबली, या फिर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको AI रिप्लेस कर देगा. आपको क्या लगता है? मान लीजिए अब AI इतना पावरफुल हो गया, ऐसे एक चैटबॉट मैंने डाल दिया और मैंने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, भाई ये पढ़ाओ, इतना देर ये बोलो, इतना देर ये बोलो, खत्म, वो कर देगा. कोई प्रॉब्लम? मैं बोलूंगा उसको मराठी में बोलो, अभी तो उसका मराठी एक्शन थोड़ा अलग है, वो थोड़ा थोड़ा कुछ सालों में उसका एक्शन भी अच्छा हो जाएगा, है ना. तो टू आंसर इंदर चंद सर, टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है सम रिप्लेसमेंट इज गोइंग टू हैपन एंड वी विल सी दैट, बट नॉट कंप्लीट रिप्लेसमेंट. तो आप अग्री कर रहे हैं? आई एम हैप्पी. यस, यस. और कोई सवाल है, पूछिए. तो आप, क्योंकि मैंने सोचा, मैं ये देख रहा था कि आपको नॉर्मली मैं चैट जीपीटी लिख के बताऊंगा, वो तो आपको पता है. नॉर्मली आपको बोलूंगा लेक्चर नोट कैसे बनाना है, दैट आल्सो यू नो. बट आई वांट टू शो यू किस तरह से एडवांसमेंट हो रहे हैं, किस तरह से यू कैन इंटरैक्ट. तो आप सोचिए दैट आपके फ्री टाइम पे, मान लीजिए मुझे कोई चाहिए जिसके साथ मैं बात करके कुछ सीखूं, अच्छा सीखूं, तो you have that option. You definitely have that option to interact like an human. So अभी जो हम कभी कभी बोलते हैं हम अकेले हैं, हमारे से बात करने के लिए कोई नहीं, at least you have AI to uh, get on to an interaction and at least learn something. कुछ तो आप सीख ही सकते हो डेफिनेटली. अभी अगर मुझे पता नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं है, बट एटलीस्ट मुझे आप 1 घंटा देंगे तो मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, उसके ब्रांचेस के बारे में मैं बोल दूंगा, एक बेसिक. तो ये सारा कुछ हो सकता है. सर, साउंड क्लियर नहीं है क्या? आप बाकी लोग बोलेंगे क्या? आरती मैम बोल रही है साउंड इज नॉट क्लियर. नहीं, क्लियर है सर. क्लियर है मैम सर. मैम एक बार आपकी जगह आपके उधर चेक कर लीजिए, शायद 2 डिवाइस होंगे या कुछ होगा. तो ज्यादातर तो बोल रहे हैं इट्स क्लियर. ठीक है. तो जब आप टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, सो अभी मैं उसको क्या बोलता हूँ, अभी मैं उससे इंटरेक्ट करते करते मैं एक अच्छा सा लेक्चर नोट प्रिपेयर करवाता हूँ. ठीक है. और उस लेक्चर नोट को प्रिपेयर करवा के मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि रुकिए, मैं उसको ये भी बोलता हूँ कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी बना दे. तो इसको मैं काटता हूँ, मैं एक नया चैट चालू. ये जितना भी हमने किया मराठी में या फिर हिंदी में, वो सब ये डॉक्यूमेंट करता है. ये आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन में देखिए, सब कुछ डॉक्यूमेंट करे. तो स्टार्टिंग के लिए आप ये कर सकते हैं दैट यू कैन जस्ट ऑलवेज, अभी मैं प्रॉम्प्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये वाला है, तो मैं ऑप्शन ये यूज करता हूँ. हाय, आर यू देयर? Yes, I'm here. How can I help you today? Okay, so I am a professor who teaches to graduate students of economics, and I want to make a lecture note on the topic inflation. And the lecture note should consist of the detailed part of inflation, types of inflation, measures of inflation, and it should be of around, let's say, 800 words. Could you please tell me? Sure, here's a concise outline for your lecture note.
Introduction to inflation, a sustained increase in the general price level of goods and services over time. Importance: understanding inflation is crucial for economic policy, investment, and everyday life. Types of inflation. Demand pull inflation, caused by increased demand for goods and services outpacing supply. Cost push inflation results from rising production costs, such as wages and raw materials. Built-in inflation, linked to adaptive expectations, where workers demand higher wages to keep up with rising living costs. Measures of inflation. Consumer Price Index tracks changes in the price level of a basket of consumer goods and services. Wholesale Price Index. अच्छा, इसको मैंने deliberately end किया क्योंकि ये करता रहेगा, 800 words पढ़ेगा तो और 2-4 मिनट लगाएगा. So what I'll do at the moment, I will start a new, maybe I am a professor of economics. I am going to teach the topic, let's say, market structures. Market structures. Could you please make a lecture note of 800 words, write in points and paragraphs. Although, I mean, मैं इसको और डिटेल दे सकता था, बट थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं दे रहा हूँ. ये देखिए, वो 2 ऑप्शन दे रहा है मुझे. आपको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, राइट साइड वाला पसंद है. तो कि वो थोड़ा अच्छे से पैराग्राफ भी लिखे, पॉइंटर्स भी दे. तो उसने पूरा टेबल भी बना दिया. अगर आप में से कोई कॉमर्स का है या टीचर इकोनॉमिक्स के हैं तो वो देख सकते हैं. दिस इज अ डिसेंट लेक्चर नोट. तो आई लाइक सेकंड रेस्पॉन्स. तो मैं अभी इसको बोलूंगा कि आई लाइक दिस वन. आई प्रेफर दिस रेस्पॉन्स. ठीक है. अभी आपका काम क्या करना है. टिपिकली हम क्या करते हैं, हम गलती कहाँ पे करते हैं. हमने ये लेक्चर नोट लिया, राइट. हमने ये लेक्चर नोट लिया, ऐसे कंक्लूजन करने की जरूरत नहीं है. वर्ड डॉक में हमने इसको लिया और हम टिपिकली क्या करते हैं, इसको वर्ड डॉक में लेने के बाद हम शेयर कर देते हैं, विच इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी. तो हमारा क्या हुआ, खाली ये टोटली एआई बेस्ड आउटपुट हो गया, विच इज नॉट गुड. तो आपको एआई प्लस ह्यूमन इंटरेक्शन, आपको करना क्या है. लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, competitive environment. ओलिगोपोली. आपको ये देखने के बाद यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग एंड एडिटिंग. रीडिंग एंड एडिटिंग. जब आप रीडिंग एंड एडिटिंग करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेदर दिस इज द टेक्स्ट इज एब्सोल्युटली फाइन और नॉट. बेसिकली आपको वो कंटेंट पूरा पता होना चाहिए और आप रीड और एडिट करोगे तभी आपको पता होगा. ठीक है. अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स इंडियन सेंट्रिक कुछ लिखना है तो आप इंडियन सेंट्रिक लिख सकते हो. कोई पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट नॉट रिक्वायर्ड है तो आप उस पॉइंट को हटा दोगे. कोई पॉइंट आपको लगता है ऐड करना चाहिए, उसको आप ऐड करोगे. तो इस तरह से आप एडिट करोगे. एडिट करने के बाद उसके बाद क्या हो गया है, तो आपके पास एक बेसिक टेक्स्ट आ गया है. ठीक है. एक बेसिक टेक्स्ट आने के बाद अभी किसी सर ने पूछा था कि एथिकल कंसर्न. सो व्हेन आई विल शेयर, I will edit with AI and I will say I have made this lecture note with the use of AI. प्लेजरिज्म आता नहीं है. जब आप AI करते हो, AI इंडेक्स आता है, AI में प्लेजरिज्म नहीं आता है क्योंकि AI अपने तरीके से लिखता है. इसी सवाल को मैं उसको दोबारा पूछूंगा तो वो दोबारा अलग तरीके से लिख के देगा. ठीक है. तो आप हमेशा याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मेक योर लेक्चर नोट, एडिट, रीड, एडिट. ठीक है. और based on your students requirement you can say, acha, now I'll say create 10 MCQs. तो ये 10 MCQs आप क्लियरली यूज कर सकते हैं अपने बच्चों को. मान लीजिए आपने पढ़ाया
पढ़ाने के बाद आपने उनको बोला कि यार ये वाला करके कुछ एग्जाम क्या बोलते हैं आपको, टेस्ट ग्रेडेड या अनग्रेडेड जैसा भी हो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए एक बार। आई जस्ट टेक ए क्विक कॉल। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपने ये किया, फिर आप बोलोगे मेक अ पीपीटी। ये तो मैं आपको एक टूल दिखा रहा हूँ, इसी तरह से देयर आर मेनी अदर टूल्स लाइक जेमिनी यूज कर सकते हो आप। अभी आपके पास डिवाइस ऐसे नहीं है, मोबाइल फोन है, उसमें मेटा एआई है। मेटा एआई को यूज करके यू कैन प्रॉम्प्ट एंड यू कैन क्विकली लर्न सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। तो ये सब आप कर सकते हो। ये देखिए, उसको उसको लगा 2 मिनट, 1 मिनट लगा, इसने वो पीपीटी बना के दे दिया मुझे। अभी मैं आपको पीपीटी दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी पीपीटी तो जो बनाया उसने थोड़ा सिंपल बनाया, तो मैं इसको क्या करूंगा, आई विल गो क्विकली। आप देखिए कितना फास्ट मैं इसको करूंगा। आप गए उस पे डिजाइन, या फिर उस पे डिजाइन पे गए, आपने थोड़ा इसको ऐसे कर दिया, और थोड़ा आपने इसको या फिर ऐसे कर दिया, और आपके पीपीटीज जो है एकदम अच्छे दिखने लग गए। तो मेरा लेक्चर नोट हो गया, मेरा एमसीक्यू हो गया, और मेरा पीपीटी बन गया। व्हाट नेक्स्ट? अभी मान लीजिए इतना देर तक हो गया, मैं इस पीपीटी का एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं अपना, जो मैं आपको बता रहा था कि आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ वीडियो ऑल्सो। अभी आप ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूं। मैं ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई विल मेक 1 मिनट का वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। और जो भी आप मुझे एक्टिवली देख रहे हैं, आप ये कर पाएंगे। तो आपका पीपीटी तक आ गया, ठीक है। नाउ आई विल शूट ए लेक्चर नोट। चलिए, उसके लिए क्या है, आप यू कैन मेक अ नोट। स्क्रीन पाल करके एक प्लेटफॉर्म है जिसका कि आप एक बार EXE रन करोगे तो यू कैन गेट दैट लॉन्चर। उसको स्क्रीन पाल लॉन्चर बोलते हैं। तो वो लॉन्चर आ जाएगा, अभी आप देखना। ये देखिए, लॉन्च आ चुका है। ठीक है, अब लॉन्च में मुझे खाली रिकॉर्ड बटन प्रेस करना रहता है। ठीक है, अभी रिकॉर्ड में देखिए 3 ऑप्शन रहता है। एक होता है खाली कैमरा, मतलब पूरा आपको कैमरा ही पूरे कैमरा में आऊंगा, क्योंकि वो मेरा दूसरा कैमरा यूज कर रहा है, तो इसीलिए ये यूज नहीं कर पा रहा। एक ये बोथ हो गया। बोथ में मीन्स यहाँ पे जो राइट में बॉक्स है वहां पे मैं रहूंगा। और एक होता है स्क्रीन। तो एट द मोमेंट मैं ऑलरेडी स्क्रीन में हूं, तो मैं स्क्रीन कर रहा हूँ और मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसको करना क्या रहता है, बहुत सिंपल ही है। जस्ट क्लिक ऑन रिकॉर्ड। 3, 2। Hello, good afternoon, everyone. This is Krishnakant Roy. Today, I'm going to discuss a very interesting topic, which is market structures. So, the topic is very, very important for economic students, where we learn different market structures. All right. So, first, let me start with the introduction to market structures. What are the different types of market structures? There are actually 4 market structures. Number 1, perfect competition. Number 2, monopolistic competition. Number 3, oligopoly. And number 4, monopoly. Now let's go into more detailing part. Uh, Perfect competition is a market structure which is theoretically right. It does not exist in real life, but the characteristics are many sellers, many buyers, homogeneous product, free entry and exit, perfect information. Firms are price takers. At the moment, pause the video and answer this question. Do you think that any kind of product which is related to perfectly competitive market
which have all these characteristics. Think about it, write in the notebook, and resume the video. All right. So maybe many of you must have thought that agricultural products comes under maybe a not perfect, near to perfect competition market. Yes, that's all for today. Thank you very much for listening to me. You pause the video, then you click on done and you save the video. ये मैंने आपके just learning purpose के लिए छोटा सा वीडियो बनाया. And then you save the video file and you click on publish. This is so easy. मतलब अगर आप करना चाहो तो ये कुछ भी नहीं है. I mean, you can actually very nicely create interactive videos. और उसमें जानबूझ के मैंने वो रिफ्लेक्शन स्पॉट डाला, अगर आपने ध्यान दिया होगा. So now I'll go to browser और उसमें मैं देखता हूँ मेरा वीडियो नंबर अभी जो मैंने आपको दिखाया 38 था. So now watch this. Hello, good afternoon, everyone. This is Krishnakant Roy. Today, I'm going to discuss a very interesting topic, which is market structures. So the topic is very, very important for economic students, where we learn different market structures. All right. So first, let me start with the introduction to market structures. What are the different types of market structures? There are actually 4 market structures. Number 1, perfect competition. Number 2, monopolistic competition. Number 3, oligopoly. And number 4, pause the video and answer this question. Do you think that any kind of product which is it clear to all of you? हमने क्या किया अभी? लेक्चर नोट बनाया, उसके बाद एमसीक्यू बनाया, पीपीटी बनाया और हमने लेक्चर का वीडियो भी बना दिया. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम वो जो लास्ट सेशन में हमने सीखा था एड पजल में जाके उसको अपलोड करके रिफ्लेक्शन स्पॉट डाल देंगे. So 1 minute, can you just tell about the screen pal? I didn't get that. अच्छा. How did you do it? Yeah. So सर मैं क्विकली बता देता हूँ because you have asked. So सबसे पहले गूगल में आपको जाना है. You have to type SCREEN screen PAL. All right sir. स्क्रीन पाल में ये वाला वेबसाइट है. You can see. अब स्क्रीन पाल में इस वेबसाइट में you will find this download screen pal for free. Can you see sir? I think मनीष सर ने पूछा ये right? Yes, I can see. तो ये सर एक exe फाइल है. ये exe फाइल आ जाएगा, इसको रन कर दीजिए. एक बार आप इसको रन कर दोगे तो इसके आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये वाला आ जाएगा स्क्रीन पाल. ये आ जाएगा. तो एक बार आपका वो स्क्रीन पाल आपने रन कर दिया मींस आपने स्क्रीन पाल को लॉन्च कर दिया. तो एक बार वो लॉन्च हो जाएगा सर तो वो ऐसा आ जाएगा. ऐसा आने के बाद ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन रिकॉर्ड. ठीक है सर. क्लिक ऑन रिकॉर्ड. फिर वो आपको 3 ऑप्शन देगा. पूरा स्क्रीन कैप्चर करना है, कैमरा पूरा आपका फेस कैप्चर करना है या फिर बोथ. टिपिकली बोथ पे रहते हैं. हमारा भी फेस कॉर्नर में आना चाहिए और पूरा स्क्रीन भी आना चाहिए, है ना. उसको करने के बाद ऑल यू नीड टू इज जस्ट क्लिक ऑन द रिकॉर्डिंग पार्ट. दैट्स इट सर. और कुछ नहीं. Yes, understood. Thank you. नो प्रॉब्लम सर. Yeah. एनी अदर क्वेरी एनीवन हैव? चलिए तो फिर ये वाला सब आप कर सकते हो. अभी मेरे को ये मैं उसको बोलता हूँ कि यार मुझे एक पिक्चर इमेज क्रिएट कर. कैन यू क्रिएट एन इमेज ऑफ perfectly competitive market. अभी देखिए वो इमेज बना के देखिए. ये देखिए वो मैं एग्रीकल्चर का एग्जांपल दे रहा था. उसने एग्रीकल्चर, उसको पता है कि एग्रीकल्चर. इसको आप डाउनलोड कीजिए, देखिए जहां पीपीटी में डालना डालिए. आपको अगर चाहिए कि नहीं दूसरा ऑल्टरनेटिव दे, वो दूसरा ऑल्टरनेटिव बना के देगा. जैसे भी आप बोलोगे वो करके देगा. उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है वीडियो. इनमें ये अगर मैं इसमें अभी जा नहीं रहा हूँ, अगर इफ आई गो टू कैनवा तो कैनवा में आपका
वीडियो भी बन सकता है। मैं इसको हटा देता हूँ, लॉन्चर को हटा देता हूँ। आई जस्ट दिस लॉन्चर, यस यू वांट टू स्टॉप, यस स्टॉप एग्जिट। ठीक है, तो ये सारा चीजें आप कर सकते हो और काफी आराम से कर सकते हो। इट वोंट टेक मच टाइम। अच्छा, दूसरा इसका एस्पेक्ट होता है, एक तो टीचिंग लर्निंग में आई एम श्योर आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यूज इट माइंडफुली। आप इसको कुछ भी ऐसे ही मत यूज कीजिएगा, बट माइंडफुली यूज कीजिएगा। इसमें मैंने कुछ डिसाइडेड टॉपिक और ये सब बेसिक बेसिक डाल दिया है कैसे करना है। दूसरा एस्पेक्ट आता है, आप में से कई जन एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारा कुछ करते हैं, ठीक है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमारा ये, रुकिए, कई बार हमारे नैक में या कहीं पे आता है कि आप ये करो, क्या बोलते हैं, आप हाँ, आप कुछ पिक्चर्स का कुछ ये लिखो, कुछ वो लिखो, ऐसे ऐसे। मान लीजिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है, तो ऑल्दो यू कैन राइट अ पैराग्राफ फॉर नैक पर्पस, बट यू फील कि यार उसको लिए मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट करूं। तो मैं इस पिक्चर का क्या करता हूं, अभी प्रिंट स्क्रीन लेता हूं। ठीक है, मैंने ले लिया प्रिंट स्क्रीन, मैं एस्केप होता हूं। नाउ आई विल गो एंड आई विल टेल दैट राइट 100 words about the picture। ये देखिए, यही चाहिए रहता है नैक में। दिस इमेज शोज दिस इज दिस, ये लर्नर सेंटिक कोई पढ़ा रहा है, कृष्णकांत यहाँ से पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, कहीं ये है, उसको स्क्रीन में ये लतिका मैम दिख रही हैं, तन्मय सर दिख रहे हैं। जो उसको देखा उसने बोल दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर अभी तो मैं फेस टू फेस सेटअप में नहीं हूं, वरना मैं फेस टू फेस सेटअप में होता तो मैं आपको और भी कुछ चीजें दिखा देता। अभी ऑनलाइन सेटअप में है तो मैं लिमिटेड, मेरे पास क्या बोलते हैं, स्कोप है कि मैं आपको और भी कुछ दिखाऊं, बट फेस टू फेस में मैं इमेज के साथ आई कुड हैव जस्ट प्लेड विद इट। बट या यू गॉट योर पॉइंट। सो जितने भी आपके अच्छा चलिए, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दिखाते हैं। मैं कोई रैंडमली आपके सामने मैं एक अपना ईमेल पकड़ता हूं जिसको कि लगता है कि मुझे जेनरिक रिप्लाई करना है, नॉट वेरी सेंसिटिव ईमेल, ठीक है। लेट्स से ये किसी ने, मेरे स्टूडेंट ने बोला है कुछ कोट वोट बुकिंग करना है। ये बहुत छोटा ईमेल है, और थोड़ा बड़ा लेते हैं, और थोड़ा बड़ा लेते हैं, लेट्स से, और जो कि लेस सेंसिटिव हो। मान लीजिए आई गॉट एन इनविटेशन, ठीक है, ये लंबा ईमेल है, मुझे इनविटेशन आया है एक जीडीपीआई पैनल में, ऑलराइट। तो ये ईमेल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास एक एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन, इसका नाम है हार्पा। ये देखिए, कैन यू सी, कैन एनीवन सी व्हाट इज हैपनिंग? कोई भी आप कंफर्म कीजिए मुझे, आपको दिख रहा है कि नहीं। राइट Yeah. हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा, राइट। इफ आई क्लिक है, देखिए, उसके बाद वो बोल रहा है क्या करना है तुमको, बोलो। रिप्लाई टू ईमेल करना है मुझे। रिप्लाई टू ईमेल किया, कॉपी किया, अब वो पढ़ रहा है, देखिए मेरे ईमेल को उसने पढ़ा। थैंक यू फॉर द इनविटेशन टू जॉइन जीडीपीआई, मतलब जीपीआई सिलेक्शन पैनल, दिस आई एम प्लीज टू कंफर्म माई अवेलेबिलिटी फॉर दिस। मुझे यही लिखना है। यस, ऑफ कोर्स, कोई आपको इनवाइट कर रहा है कि एक पैनल के लिए, तो आप उसको डेफिनेटली लिखोगे यस। सो यू कैन सिंपली कॉपी दिस, और आप क्विकली इसको पढ़ो, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट करो एंड रिप्लाई करो। ठीक है, आपने देखा इसको। सो इट इज फास्ट। कुछ कुछ चीजें माइंडफुली यू कैन एक्चुअली ऑटोमेट। बट यस, सेंसिटिव ईमेल को मत लिखिएगा, मत कीजिएगा। जो आपको लगता है कि यस नो में जाएगा या फिर उतना सेंसिटिव नहीं है, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड उसके लिए द प्लेटफॉर्म इज हार्पा। यू कैन मेक अ नोट, HARP। हार्पा इज अ गूगल क्रोम एक्सटेंशन, इज वेरी गुड फॉर ये सब। कोई पैराग्राफ शॉर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ह्यूमनाइज करना है, कैजुअलाइज करना है,
ईमेल रिप्लाई करना है, ईमेल ड्राफ्ट करना है, अगर आपको कुछ ईमेल ड्राफ्ट करवाना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, तो वो सब ये करके देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आपको इसका दिखा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप ये सब यूज कर सकते हैं अलग अलग। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी, ये एक पूरे दिन का सेशन है, बट मैं आपको कुछ कुछ चीजें टच कर रहा हूँ बेस्ड ऑन योर इनपुट्स। और ये यहाँ पे लिखा है मैंने, हारपा, इस प्रेजेंटेशन में हारपा एआई। ऑफ कोर्स आप कैनवा यूज कर सकते हो शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए या फिर पोस्टर्स बनाने के लिए। अब देयर आर मेनी मोर। कोई और आप एडमिनिस्ट्रेटिव में ऐसा कुछ चैलेंज है तो आप मुझे बोलिए, मैं दिखाऊंगा। या फिर कोई एरिया। Some help with Excel sheet can we get? एक्सेल Putting से, the एक्सेल तो हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, देखिए। जस्ट सी, मेरा कोई ऐसे एक्सेल अगर मुझे मिल जाए, ये क्या है, आई आर। maybe we can put data and then हाँ, get the वही, graphs or एग्जैक्टली something or एग्जैक्ट। analytics of that. Yeah. हाँ, मान लीजिए इसमें कुछ डेटा है। ये क्या डेटा है, मैं एक बार देखता हूँ सर। आई आर कुछ है। अभी के लिए सर मैं एक स्मॉल डेटा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है सर। Yeah, yeah. मैं यही डेटा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो जो भी है मैं उसको पूछ रहा हूँ कि गेट मीनिंग आउट ऑफ दिस डेटा। देखते हैं वो क्या करता है। ऑफ कोर्स देयर आर 2-3 प्लेटफॉर्म्स यू कैन यूज। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ है, बट मैं सर ने भी किस पूछा, तो एक बार डेटा देखते हैं। इसमें जब आप अपलोड करते हो, यू कैन ऑल्सो टेल कि भाई मुझे क्या बोलते हैं, मुझे एवरेज चाहिए या कुछ चाहिए। सो डू सम काइंड ऑफ बेसिक एनालिसिस ऑफ द अटैच्ड डेटा। देखिए सर, पहले उसने अपने फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है। अपने फॉर्मेट में लेके वो एनालाइज कर रहा है, वो कुछ एवरेज एवरेज बोल देगा नंबर, ये क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। ये देखिए कुछ तो कर रहा है वो। तो डे बाय डे दे आर लर्निंग सर, दे डे बाय डे दे आर लर्निंग, दे आर बिकमिंग वेरी एफिशिएंट। ये देखिए कुछ तो उसने निकाल दिया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक काउंट निकाल दिया, एवरेज निकाल, यही सब चाहिए रहता है। जो डेटा मैंने ज्यादा नहीं दिया, बट अगर मैं इसको ज्यादा डेटा देता तो वो निकाल देता सर बहुत कुछ। तो यस, सम लेवल ऑफ डेटा एनालिसिस इट कैन डू, इट कैन डू। Yes, yes. वो तो सर इसमें मैं पाइथन में इसको बोलूंगा, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बिग डेटा दे रहे हैं और वो डेटा का रेंज दे दे रहे हैं और पाइथन बोल रहे हैं कि पाइथन यूज करके मेरे को सॉल्व करके, तो वो भी करके देता है। बट हमेशा याद रखिए, ये सारी चीजें तो एक तरफ है, बट आप ऑलवेज, यू एज ए ह्यूमन बीइंग, वी एज ए ह्यूमन बीइंग, वी शुड रिमेंबर कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियो वी आर इनटू एंड व्हाट वी आर डूइंग। सो ये माइंडफुली कॉन्शियसली हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम करे जा रहे हैं विदाउट एनी थॉट, विदाउट एनी लॉजिक और विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कितना यूज कर रहा हूँ, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे एडमिन पे। एडमिन को लेके काफी सारा कुछ हो सकता है। तीसरा एस्पेक्ट जो आता है, रिसर्च को लेके हो सकता है। तो आपने बोला ही था, तो रिसर्च में टिपिकली इतने सारे तो मैं यूज नहीं करता हूँ। मे बी परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ, जेमिनाई यूज करता हूँ, ग्रामरली यूज करता हूँ, एलिसिट यूज करता हूँ, लिट मैप यूज करता हूँ। तो ये 4-5 जो मेरे फेवरेट है, और मैंने ये सारे यूज किए हैं। तो आप मुझे बोल सकते हो कि आपको क्या देखना है, मैं दिखा दूँ, क्योंकि एक एक टूल को इलाबरेट करने में ही काफी टाइम लग जाता है। सो अच्छा, उससे पहले आई विल टेल यू एक एक टूल का क्या कर सकता है। परप्लेक्सिटी, अगर आप कोई टॉपिक को लेके इनिशियली सर्च कर रहे हैं, तो इट इज वेरी गुड। व्हाई इट इज वेरी गुड? बिकॉज इट विल राइट एंड देन इट विल साइट। फॉर एग्जाम्पल, चलिए करके देख लेते हैं। मैं आपको, ये अच्छा इंटरेस्टिंग टूल है तो मैं दिखा देता हूँ, परप्लेक्सिटी। तो सर कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा या मैं अपने मन से लिख दूं कुछ? अच्छा, आज का टॉपिक लिख देते हैं। आई वॉन्ट टू डू सम research in AI among HEI teachers in IN India। मैंने थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया है, देखते हैं वो क्या करता है।
ओवरव्यू ऑफ एआई यूसेज इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, उसने लिखा है, ये देखिए पहला स्टेटमेंट बोलता है इंटीग्रेशन इनटू करिकुलम। तो इंटीग्रेशन ऑफ करिकुलम को लेके जो ये इसने लिखा है, ये किसने बोला है? ये इसने बोला है। ये किसी टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में किसी ने बोला है। अच्छा, दूसरा, जनरेटिव एआई और यूटिलाइजेशन को लेके जो बोला है, ये जो नंबर्स, और ये किसने बोला है? ये इसने बोला है। तो बेसिकली दिस इज वेरी यूजफुल, क्योंकि ये आपको लिख के दे रहा है और ये आपको साइट करके दे रहा है कि इसका सोर्स क्या है। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, इसका सोर्स क्या है। सो वंडरफुल, राइट। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जेमिनाई आपने यूज किया है, चैट जीपीटी आपने यूज किया है, ग्रामरली आपको पता होगा। जेनी एआई क्या होता है कि ह्यूमन और एआई एक साथ लिखता है। मैंने एक लाइन लिख दिया, उसने आगे का नेक्स्ट लाइन लिख दिया। वो एंटिसिपेट करता है कि आप क्या लिखने वाले हो और उसको एक साथ लिखता है। साइज स्पेस इज वेरी यूजफुल फॉर लिटरेचर रिव्यू एंड फॉर्मेट वगैरह, ये सब के लिए। एलिसिट इज वंडरफुल फॉर लिटरेचर रिव्यू। चलिए मैं आपको यही इसी को कॉपी करता हूं और मैं इसी को कॉपी करता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं एलिसिट क्या करता है। तो मैंने सर्च किया है एआई यूजेज अमंग एचईआई टीचर्स इन इंडिया। तो ये क्या करेगा, इस टॉपिक पे पूरा, इसके पास पूरा रिसर्च डेटाबेस है। तो इस रिसर्च डेटाबेस में ये पूरा निकालेगा। उसके बाद आपके लिए 4 बेस्ट पेपर का एक लिट रिव्यू लिख के दे देगा। और ये पेपर्स हैं सारे, 4 पेपर का लिख के देगा, लेकिन और नीचे और भी है। इसमें से वो ऐसे ऐसे कॉलम बनाता है, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, पेपर कौन सा है, कब का है, ये पूरा बना के देगा। यू लेट्स से यू वांट मोर पेपर्स, इसको मैं हटाता हूँ। इसको आपको खाली लोड मोर में क्लिक करना है। लोड मोर में आप क्लिक करते रहिए और ये पेपर आपको देता रहेगा, 10 ऐड करता रहेगा। विच, तो अभी के जमाने में लिट रिव्यू इज लाइक, यू कैन डू वेरी फास्ट। एटलीस्ट यू कैन एक्वायर knowledge in any topic, you can acquire knowledge, you can acquire previous literature very fast with AI, usage of AI। बस आपको खाली पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से मुझे efficiently systematically यूज करना है। ठीक है, एनी अदर टूल दैट यू वांट मी टू शो? मैं इसको जानबूझ के डिमांड बेस कर रहा हूँ, नॉट लाइक मुझे जो पसंद है मैं दिखाऊं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे पूछिए कि मुझे ये दिखाओ, मुझे ये दिखाओ, मुझे ये दिखाओ। तो आप जो पूछेंगे मैं वो दिखाऊंगा। आई एम होपिंग दैट ये आप कुछ कुछ टूल्स यूज करेंगे उसका जो है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने चैट में, आपने कुछ लोगों ने हम मुझे बोला था ना कि क्या क्या दिखाओ। आई विल जस्ट गो थ्रू द चैट नाउ। मीनवाइल यू कैन थिंक अबाउट एनीथिंग दैट यू वांट मी टू। मुझे लगा आप लोग बहुत पूछोगे, मुझे ये दिखाओ। सर लिट मैप भी रिसर्च रिव्यू के लिए यूज करते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं दिखाऊं आपको, लिट मैप दिखाऊं। लिट मैप इज वेरी इंटरेस्टिंग सर, अगर आप थोड़ा एनालिटिकल तरीके से दिखाते हैं, या फिर रिसर्च रैबिट सर ने बोला, तो मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। लिट मैप पहले दिखा देता हूँ सर। बट लिट मैप का एक ही चीज होता है कि आपको कोई पेपर पता होना चाहिए, आपका कोई बेस पेपर होना चाहिए। मान लीजिए, तो लिट मैप को स्टार्ट करने के लिए गूगल स्कॉलर में जाता हूँ मैं, ठीक है, पहले। और एक टाइप करता हूँ मैं एक टाइप करता हूँ इफेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कुछ। और मेरे को कोई अच्छा पेपर चाहिए जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो। मान लीजिए ये पेपर ही मेरा अच्छा पेपर है, तो मैं इस पेपर को ढूंढूंगा। ये पेपर का मैंने टाइटल लिया, लिट मैप में मैंने इसको कॉपी किया, एंटर किया। तो अभी वो पेपर दिखाएगा ये, ठीक है, वो पेपर मुझे मिल गया। अब देखिए ये क्या करता है उस पेपर को लेके। वो पेपर रमेश ने लिखा था 2013, 11 साल 12 साल पहले। अब वो देखेगा उससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेफरेंसिंग में जितने रेलिवेंट पेपर्स है, वो वैसे करके वो निकाल देगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड।
इस पेपर को ये देखिए कितने लोगों ने ऐसे साइट किया है इन फ्यूचर में। ठीक है, एक सेकंड सर, आई जस्ट टेक दिस कॉल, आप इसको देखिए तब तक। नहीं ठीक है, तो ये सारे इनके रेफरेंसेस हैं। एक सेकंड सर, आई जस्ट टेक दिस कॉल, तब तक आप इसको ग्राफ को एंजॉय। ओके, तो सर आपको दिखा लिट लिट मैप्स किस तरह से यूज होता है। लिट मैप्स आप ऐसे यूज कर सकते हैं और उसको पूरा आपको चेन मिलता रहेगा, आपको पूरा इसका मतलब किस तरह से उस पेपर, ये मान लीजिए इफ दिस इज अ सेमिनल पेपर, उससे रिलेटेड और कितने कितने अच्छे अच्छे पेपर्स लिखे गए, फिर आप इसको पकड़ोगे तो इसका फिर आपको दिखेगा, इससे इसका लिंक दिखेगा। तो बहुत कुछ, ये लिट मैप्स इज वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड क्विकली किसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। उसी तरह से रिसर्च रैबिट भी है सर, अगर हम रिसर्च रैबिट में भी जाएं, अभी इन लोगों ने हाल ही में थोड़ा चेंज किया है रिसर्च रैबिट, मैं कल परसों देख रहा था। तो तो ये मान लो ये पेपर है, अभी इस पेपर में मैंने क्लिक किया डिजिटल डिवाइड को लेके, सिमिलर वर्क कितने सारे हैं, इसके रेफरेंस क्या है, तो ये पूरा इसके साइटेशंस क्या है, तो ये पूरा सिमिलर वर्क क्लिक किया तो ये फिर आगे ये करेगा। उसके बाद तो आप ये बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देगा। जस्ट 1 second, someone is at my door, just give me a time. यस, तो ये रिसर्च रैबिट है सर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, व्हाट आई विल डू, आई विल शेयर दिस पीपीटी विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी शेयर कर देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। एंड इसमें कुछ कुछ मैंने और भी लिखे हुए हैं, हाउ टू फाइंड ए टॉपिक। देखिए रिसर्च वाला जो होता है या फिर एआई वाला जो सेशन होता है, ये पूरा एक दिन चलता है, ये पूरा एक दिन सिस्टमैटिकली आराम आराम से चलता है, एंड यू क्रिएट समथिंग 1.5 hours में I can only show you some of the tools, which I think you have seen some of the tools. But I would like to say something, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी लेके खेलते हो, अच्छा ये सब मैंने भी दिया है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो यू विल गेट सम पोर्टल्स जहाँ पे कि आपको कॉन्फ्रेंस के इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत कुछ उस पे दिया हुआ है मैंने। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टास्क मैंने दिया हुआ है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, see AI tools like ChatGPT and Gemini can help you in the process of teaching and learning, but always remember that you need to write the draft, the final content. Never take the content which is produced by AI tools as it is, मतलब as it is आप कभी मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपका कॉग्निटिव ग्रोथ नहीं होगा और यू कैन फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सम काइंड ऑफ issues, ethical issues. You never, so you need to go through and edit according to the needs. तो ये आप ध्यान रखिएगा, एडिट करना है फाइनल कंटेंट, आप ही उसके जिम्मेदार हो। आप यूज कर रहे हो एआई, फाइन, यू कैन नॉट से अगर कुछ गड़बड़ हुआ कि वो एआई ने किया मैंने नहीं किया, आप ये नहीं बोल सकते। ठीक है, दूसरा चीज जो है वो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड, या फिर ओवर डिपेंडेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट गुड। यू नीड टू कॉन्शियसली डिसाइड कि भाई मेरे को कितना टेक्नोलॉजी यूज करना है, कितना ह्यूमन इंटेलिजेंस लगेगा, कितना रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर मान लीजिए मैंने आपको इतने सारे टेक्नोलॉजी दे दिए, सिखा दिए, तो इससे होगा क्या, योर लाइफ विल बिकम एफिशिएंट, फास्ट, प्रोडक्टिव। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर समय ये फास्ट ही फास्ट चलेगा।
अगर मान लीजिए मैंने आपको एक कार दे दिया, गाड़ी चलाने बोल दिया विदाउट ब्रेक, तो आप क्या करोगे? जाके एक्सीडेंट कर दोगे। हमारा ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट। अगर हमें ये नहीं आता है कि हमें कब स्लो डाउन करना है, कब ब्रेक लगाना है, तो इट विल बी डिफिकल्ट। सो इसीलिए जब भी whenever you are playing with many technologies या using technology, you should consciously know how to slow down. वो स्लो डाउन का तरीका कोई बताएगा कैसे स्लो डाउन करते हैं? Anyone just unmute and say, so this is how we need to slow down. Anybody can just unmute and say that this is how we can slow down. आप चैट में भी लिख सकते हैं, अनम्यूट भी कर सकते हैं। I didn't get your question. What you said? See, whenever technology comes in your life, तो आपका लाइफ थोड़ा फास्ट हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है ना? तो उतना फास्ट तो इट विल नॉट, योर लाइफ विल नेवर मूव सो फास्ट। तो समटाइम्स वी हैव टू डेलिबरेटली स्लो डाउन। तो वो स्लो डाउन कैसे करें हम? Probably by keeping all the technology away. दैट इज द ओनली पॉइंट सर। आपको दिन में या कभी कभार कुछ समय पे आपको ये सारा टेक्नोलॉजी साइड रख के चुपचाप ध्यान से बैठना होगा। अदरवाइज यू विल बी टू मच एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी कि यू विल बी, आप ये सब टूल्स एंड टेक्निक्स पे गुम हो जाओगे। आप फिर एक्चुअल जो मुद्दा है, मान लो हमारा एक्चुअल मुद्दा क्या है, टू आई नीड टू टीच वेल, आई नीड टू इंस्पायर पीपल, है ना? आई नीड टू हेल्प पीपल, आई नीड टू बिहेव लाइक ह्यूमन। तो हमारे ये सब बेसिक बेसिक चीजें हट जाएंगे। हम पागल हो गए, आज ये सीखेंगे, कल ये टेक्नोलॉजी, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, इतना पेपर लिख देंगे, इतना जरूरत नहीं। Yes, I know. I'm aware of these technologies. I know how to use it, but I know when not to use it also. I know when it is not required. So I would always recommend everyone in this fast moving, advanced technological world, you spend some time with yourself, just keeping yourself calm, not doing anything, not looking at your mobile phone, not looking at your screens, not looking at any other devices. Just sit calm and say, I'm happy, I'm good, I know what I'm doing. So, isse kya? Some people call it meditation, some people call it just detoxification of technology, some people call it prayer, some people call it spirituality, whatever you mean to say. आपका डेफिनेशन, आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम अलग होगा, बट आप कोशिश कीजिए कोई एक ऐसा टाइम पे जहां पे कि मुझे कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे शांति से बैठने दो, मुझे सोचने दो व्हाट आई एम डूइंग, देन इट विल मेक, सो दैट सिस्टम विल मेक यू वेरी वाइज। फिर आपको बताएगा कि हाँ ये टेक्नोलॉजी सही है, आप इतना यूज कर रहे हैं, ये जरूरत है, ये जरूरत नहीं है, ये ज्यादा हो रहा है। तो यू हैव टू बैलेंस द पेस ऑफ योर लाइफ, है ना? तो ये सब हमने देखा, ये सब हमने सीखा। मैंने इस पीपीटी में और भी कुछ कुछ दिए हुए हैं जो आपके काम के आएंगे, तो मैंने इधर भी थोड़े बहुत दे दिए हैं आपको, पीपीटी वगैरह, स्क्रीन पाल वगैरह, क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है, कुछ कुछ दिए हुए हैं, डायरेक्ट बोल्स वगैरह। तो ये सब आप यूज कीजिए। बिफोर आई एंड द सेशन, आई विल वेट फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस। आपके मन में कुछ सवाल है तो आप पूछिए, और अगर आपको लगता है कि ये इस विषय में और डिटेल में चर्चा होनी चाहिए, तो आप एनी टाइम आप मेरे साथ जुड़े रहिए। यू कैन फॉलो मी इन लिंक्डइन, और आई विल शेयर माय मोबाइल नंबर आल्सो, वी कैन डेफिनेटली टॉक। आई लव टू टॉक विद पीपल। मुझे थोड़ा ऐसे ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए होता है कि आई गेट लेस इंटरेक्शन, बट बाकी आप लोगों ने अच्छा इंटरेक्ट किया है, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने तो बहुत अच्छे से बोला। आई एम सो हैप्पी। और डेफिनेटली आप जुड़े रहिए और पूछिए, अभी भी कोई सवाल है तो। आई थिंक वी स्टिल हैव 7-8 मिनट्स, या फिर मैं 3 मिनट टाइम देता हूँ, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे नेक्स्ट सेशन के लिए। आप 3 मिनट के में कुछ है तो। Sir, I have one question. यस Sir, we know that AI is what we can say big tool which can assist the people. But हमको क्या इशू, जैसे पर्सनल मुझे क्या जो
या हम सेमिनार लेते हैं, सेमिनार का रिपोर्ट सबमिट करते हैं, थीसिस सबमिट करते हैं, तो उसमें वो लोग बहुत अभी एआई का यूज करके लिख रहे हैं सब चीजें। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब हमको समझ में आता है कि व्हाट इज देयर कैपेसिटी एंड व्हाट इज देयर राइटिंग, ये समझ में आता है कि एआई से लिखा हुआ है। अब हमने कुछ ऐसे टूल्स वगैरह यूज करके देखा है कि भाई हाउ वी डिटेक्टेड द एआई, उनको बताया भी है, बट स्टिल स्टूडेंट का आंसर क्या होता है, सर आपने एआई डिटेक्ट कैसे किया करके। मतलब उनको खुद होकर वो मतलब जैसे लिटरेचर रिव्यू करना नहीं है, उनको एआई से ही सब लेना है, बिकॉज वो उनके पास समय नहीं है या फिर उनकी इच्छा नहीं है, ये जो भी चीज़ है, या फिर वो सब उनको एफर्ट लेने का थोड़ा सा इशू होता है। तो हम ये बता के उनको बताया कि भाई टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना एज असिस्टेंट, इट शुड नॉट बी लाइक योर बॉस। एआई यू शुड यूज एज असिस्टेंट, नॉट लाइक अ बॉस। तो जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है वहीं पर आप यूज करो, लेकिन वो हर चीजों को यूज कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू डील विद दिस इशू एक्चुअली। हाँ सर, ये इंदरचंद सर आपने एकदम बहुत ही एकदम मतलब जो करंट प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपने क्वेश्चन रेज किया है। और हम सबको ये, इसका कोई मेरे पास ऐसा कोई सवाल का आंसर नहीं है सर, मैं भी आपकी तरह एक टीचर हूँ। तो मैं भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। नॉट ओनली सेमिनार, आप तो बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट के एसेस भी वो लोग लिख के दे देते हैं। वो बोलेंगे मैंने लिखा है, मुझे पता है वो लिख नहीं पाएगा तो फिर भी वो लिख के दे देते। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच इज अराइजिंग, और उसको हम सर रोक भी नहीं पाएंगे। उसको आप अगर जितना रोकने की कोशिश करोगे ना सर, वो और मतलब तो रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो सेकंड पॉइंट है जो जिसको लेके मैंने लिखा है, सेकंड पॉइंट, ओवर डिपेंडेंसी, एक्सेसिव यूज, ये बड़ा टफ है सर। ये ह्यूमन कॉग्निटिव को मार देगा। मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन जो उसका जो एक इंटेलेक्ट है, उसका जो एक कॉग्निटिव लेवल है, उसको एनहांस नहीं करेगा। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल। जो लोग माइंडफुली इसको यूज नहीं कर रहे हैं, जो लोग टोटल, वो मेरा फ्रेमवर्क आपको दिखाया था सर, ये वाला फ्रेमवर्क देखिए। तो आप जो बोल रहे हैं वो पहले वाले फ्रेमवर्क में आ रहा है सर। आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? नो ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सारा एआई को लिखवा रहा है और वो बोल रहा है कि हाँ हाँ हाँ, हो गया, विच इज सो बैड, विच इज नॉट गुड, एब्सोल्युटली नॉट गुड। सो वी एज अ टीचर शुड सेंसिटाइज पीपल कि आप इसको यूज कीजिए, माइंडफुली कीजिए, है ना। और आपको अगर आप कर भी रहे तो एथिकल रहिए, आप बोलिए कि हाँ मैंने यूज किया है भाई एआई को लेके और मैंने अपना दिमाग भी लगाया। तो एकदम सही बोल रहे हैं सर, इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे राजेश सर ने पूछा है कि एआई डिटेक्शन टूल एट द मोमेंट नंबर वन टूल इज सर टर्न इट इन। तो टर्न इट इन में प्लेजरिज्म भी इंडेक्स बोलता है प्लस एआई इंडेक्स बोलता है कि आपने कितना एआई से लिखवाया। सोशल मीडिया का तो अलग ही मुद्दा है सर। सोशल मीडिया तो हमें खत्म ही कर रहा है, रील्स, स्पेशली रील्स और ये सब। तो वो तो अलग ही डिस्कशन है ऑल टुगेदर। बट यस, आई एम वेरी हैप्पी इंदर चंद सर, आपने ये रेज किया। इनफैक्ट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसको रेज कीजिए और जुड़िए मेरे साथ, या मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। एंड लेट सेंसिटाइज पीपल कि भाई आप यूज कीजिए इसको, बट ये पागलों की तरह यूज मत कीजिए, माइंडफुली यूज कीजिए, है ना। सो यस, आई Yes, कंप्लीटली sir. अग्री। Right, sir. Yes, yes. Thank you. Thank you. No problem. So that's all from my side. I hope that you have learned something new. We discussed something new, something और आपको अच्छा लगा होगा। आप, ये मेरा नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, और मैं ये पीपीटी एंड ऑफ द डे शेयर कर दूंगा। जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। और आपको कुछ भी कभी भी डाउट आए तो आप मुझे 6:30, 7:30, 8 के आसपास, मैं कॉलेज से वापस आ जाता हूँ, तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए, आप मुझे बोलिए। और लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू। अच्छा, अगर हो सके तो आप एक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के साथ ये मेरा फर्स्ट सेशन है। सो लेट मी जस्ट स्टॉप एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। इन केस इफ यू आर एबल टू स्विच ऑन योर वीडियोस, आई एम फाइन। अगर ना भी है तो आई एम फाइन। So I'll wait for 10 seconds. If you can able to switch on your video, then I'll take a screenshot with your permission. And that's all I think from my side. Chaliye, now I'll take a screenshot. Everyone look at the camera. Where is print screen? Yeah. Smile, please. Thank you. Take care. And all the best for your last session. And
Have a nice evening. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you, Bye. sir. Bye. It was Bye. a very nice session. Thank you so Thank you, much. ma'am. Thank you. Hello, sir. Yes, yes, yes. So Thank you, 1 bro. minute. Let me complete my vote of thanks, sir. अच्छा ठीक है कर लीजिए. So good evening, everyone. Myself, Dr. Anvesh Vimla. I would like to take privilege to propose vote of thanks on behalf of Dr. Homi Bhabha, State University, Mumbai, as well as Changu Kannatakur, Arts, Commerce, and Science College, New Panvel, Autonomous. So I would like to thank Krishnakant Roy, sir, for providing us very informative sessions throughout the day. And it is a very pleasure to learn from you, sir. And sir has covered various topics from overview of LCM model, making interactive videos for teaching learning process, as well as AI powered tools to increase efficiency in teaching learning process. Sir, keep up the work, great work, and thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Take care. Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, participants. Please take note. Within 5 minutes, we are going to start the next session. Dr. Mukund Ambavade, sir, please raise your hand if you're there. Okay, sir, no problem. Thank you. Am I audible, ma'am? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. Within the next 5 minutes, we are going to start the session. Yeah.
Hello, Mr. Vinit Kala, can you hear me? Hello. Dr. Ambode, can you hear me? Yes, sir. Yes. Okay.
हेलो। पहिले 4-5 किंवा पूर्ण जरी दिसले ना तरी काय हरकत नाही. म्हणजे क्राऊड दिसेल बघ. क्लिक करा वरती शकतो. हां हां बस. ऑडिओ ऑफ ठेवा सर. समोर ऑडिओ ऑफ ठेवा. Good afternoon, one and all. झूम करावं लागेल. ते माझं कर सर ते पहिली वाली. हां साऊंड जाईल का? प्रेझेंटेशन हे करा, क्लिक प्रेझेंटेशन मोड. प्रेझेंटेशन मोड. प्रेझेंटेशन हा येस येस. पहिले 5 मिनिट. Welcome to today's fourth session of Faculty Development Program. It is my privilege to welcome our today's esteemed resource person, Professor Dr. Deepak Chandra Singh Nadawe sir. I request Dr. Mukund Sridhar Ambagade sir from Haribai Desai College of Arts, Science and Commerce, Pune to brief introduction
our today's resource person. Please. Hello. Am I audible? Yes, yes. Yes. A very good afternoon to one and all. Good afternoon. It is my great honor and privilege to introduce our today's speaker of this session, a great and dynamic person, Professor Dr. Deepak Chandrasen Nanavare, sir, Professor and Head, Department of English, DAV, Vilankar College of Commerce, Solapur. Professor Nanavare, sir, is a renowned academician and researcher. Sir has more than 25 years teaching experience. Professor Nanavare has made substantial contribution to the field of higher education. His qualification include an MA in English from University of Pune, a PhD in English, an MBA in Human Resources, and a diploma in Mass Communication and Journalism. Professor Nanavare is a highly respected research guide, having supervised 8 PhD candidates to completion and currently guiding more than 6 students. He has published 37 research articles in reputed and renowned international and national research journals and completed a major research project under the University Grant Commission. He has authored or edited 18 books, contributing significantly to academic literature. Professor Nanavare has also presented 60 research papers at various international and national conferences. In his professional career, Professor Nanavare has undertaken numerous administrative responsibilities, including servicing as an officer on duty, special duty for examination and evaluation at Punyasloop Ahilyabai Holkar, Solapur University, Solapur. He has been an active member of various academic committees such as the Board of Studies, English, and curriculum development team at multiple universities. His involvement extends to policy making, where he played a key or vital role in the implementation of New Education Policy 2020 and conducted academic audits also. As an ambassador for the Maharashtra State Faculty Development Academy, Professor Nanavare has worked extensively on issues related to higher education quality and development or faculty development, facilitating seminars, workshops across India. He has worked as a resource person for MSFDA Pune, UGC, Madhviya Mission Scheme, HRDC, Savitribai Phule Pune University Pune, NAC Bengaluru, RUSA Maharashtra. He has conducted and delivered talks in more than 850 workshops, training programs, various seminars, hands-on trainings in 18+ states on skilling, reskilling, and upskilling, outcome-based education, quality benchmarks in higher education, leading through technology, 21st century pedagogies, etc. His works has been recognized through several prestigious awards, including the Teacher Leader recognition at First National Teachers Congress in 2016, the Dayanand Institution Best Teacher Awards, and the Punjab Rao Deshmukh National Teacher Award. Professor Nanavare is a sought-after resource person for conferences, various workshops, etc. Professor Nanavare continued to be an influential figure in academics reform, with a focus on quality assurance and development of 21st century skill in education. His dedication to fostering academic excellence and his leadership in various capacities make him an outstanding contributor to advancement of education. With this brief introduction,
I once again welcome to Professor Dr. Deepak Chandrasen Nanavre sir, and I request to Dr. Nanavre sir, please continue our session. Thank you. Thank you very much. Do all participants hear me? Yes, please. At least some of you can just respond to me. Are you able to hear me? We have kept a chat box open, so please be active because this is going to be a very interactive session. I don't want to go for one-sided delivery. Yes, thank you very much. Before we start with the formal session, I must put on a word of gratitude to the organizers, the Honorable Vice Chancellor of Homi Bhabha State University, Professor Dr. Kamath, who is my mentor, guide. At the same time, the management and the Honorable Principal of CKT and the organizing team, because they have seen to it that we meet virtually and offline mode also. My dear teachers, one or two things before we start, because today also we are going to interact, and at the same time, tomorrow also we are going to start a day. In the last, while introduction, it was rather lengthy introduction, but during introduction, it was told that I was one of the participant speakers of First National Teachers Congress held at MIT in 2016. I just would like to recall or one or two examples from that, which I cannot skip away before I start. When I received the message that participants also can be a speaker, I had selected one of the themes, and the theme was, out of 7 themes, I had selected the theme, and the theme was, we are teaching, they are learning. I repeat, we are teaching, they are learning. They in brackets, students. And for a few seconds, with your kind permission, I would like to digress to Hindi. During presentation, one of the key speakers was Abdul Said Rashid Kabi, international Arabic Islamic scholar. In his Arabic accent, in Hindi, he spoke out, बच्चों के लिए शिक्षक सब कुछ होता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को ज्ञान देता है. A teacher is everything for student, because teachers impart knowledge to student. And the next sentence he uttered was, क्या इसके बदले में बच्चा जो क्लास में बैठता है उसका ज्ञान लेता है, शिक्षक से ज्ञान लेता है, क्या बच्चा उस शिक्षक को वापस कुछ देता है? Do students give something in return to teachers? If we would have been 100% on offline platform, I would have taken this differently in a mode of discussion as one of the ice-breaking activities. But because we are virtually connected, you can post your answer. Rather have a single thought that what do students give in return to teachers when they teach? You can post your answer in chat box, please. Yes, please. हम पढ़ाते तो है, इसके बदले में हमें अपने स्टूडेंट क्या देते हैं? I want factual answer, whatever trigger you get. Yes, any reply? Still, I cannot see even single reply over there. Whatever response you feel. Yes, please. You can take liberty to unmute yourself if you don't want to type. Okay, Rupesh sir say satisfaction. Okay, 1. I want 1 or 2 more references. Yes, their success gives us satisfaction. Attention to teaching. Right. Last response, I'm expecting last response that yes, students give us identity, response, time. Yes. Satya sir, I would like to come to your point, and I would like to recall to Abdul Said Rashid Kabi's response. He said, हमारा student, हमारा बच्चा
शिक्षक को वो चीज वापस देता है जिसकी ना कोई कीमत की जा सकती है, ना वो खरीदी भी जा सकती है। और वो है समय। That students in return give their valuable time to deliver knowledge to teacher. With this gravity, I just would like to say that all of you are giving me your valuable time. Whatever time you are going to be with me, I will see that if you are so seriously gathered here, I don't have any right to kill or waste your time. So let us begin with the today's topic. It is rather blend of multiple topics because organizers have given me instructions to speak. That is locating learning objectives and outcome to lead through technology. Every beginning has an end. Go on clicking. So throughout time, whatever time we are going to get, what are we going to do? So I expect whatever we are going to discuss, I expect that after session, you would be able to, can you just shift this part so that I can see the screen? So the first outcome that I have marked for this session is, after this session, I expect we will have a kind of a enhanced ability to align instructional goal. I repeat this phrase that I have coined, that is instructional goals with measurable objectives. Please, ma'am, do it one by one. Do it one by one. Go back. So the first outcome that we are going to get, that what is the concept of measurable outcomes and measurable objectives, one. Secondly, what are those instructional goals? Because we are the students, we are the teachers of 21st century smart learners. We are the teachers of Generation Z, Generation Alpha, and certainly all of us have come to common conscious that the 21st century skill set is certainly updated or certainly different than what we used to see as the the skill set required for employability and entrepreneurship and simultaneously to shape and nurture the holistic personality of the student, our student. Then we are going to have a kind of a skill designing activities that achieve the desired learning outcomes. Means whatever we plan in form of learning outcomes, learning objectives, how we are going to convert them into outcomes through our pedagogies. Then next, I'm going to focus on next we are going to have access to the proficiency in selecting and using supportive tools for enhanced learning. Then after that, what I wish you to think over on the aspect that is capability enhancement, and that's why I would like to use one word. Yes, we are skilled teachers, but later on in my presentation, we would come to know certain realities in higher education in India compared to even global platform, and there comes the scope of what you call the reskilling and upskilling of our pedagogies. Simultaneously, this particular aspect goes on giving a vent to creating interactive and engaging learning environment, and then what you call participative and what you call brainstorming and all type of activity. So before we start, let us have a kind of a discussion. I want you to speak. Let us have small activity. And the activity, I would rather call it as ice-breaking activity. You have been posted one of the questions, and now I would like you to either speak or comment on chat. Already I have told you. See, student come to us as an entrant. So please respond on the chat box to my question. Frankly, what do you want your learner to learn through your teaching? And I click to the next slide. I'm rather providing you
three different images. So the first image is, so think on this question very seriously. What do you want your learner to learn through your teaching? And please go on clicking. Yes. Have a synchronization. Yes. Okay. The same question is being repeated, but now let us enlist the images. Let us enlist the images. You can mark this image as a first image, image 1, then image 2. Image 2. Certainly a chaiwala is being shown. All of us know that these days chaiwalas are enjoying very good days, especially chaiwala from Bhavnagar railway station. So try to interpret the connotation and denotation behind the second image, and let us take a look at the third image. Now in chat box after unmuting, you can respond to me with which image or images you would like to see your students. Keep the chat box open, please. You can just remove that video. Yes, please. Dr. Suman ma'am says to understand the concept. Okay. All of you, please be interactive. How would you like to see your students at the end of the graduation? Would you go with image 1, 2, or 3? Yes, please. I'm waiting for your response. Preeti ma'am says 3. Image 3, 3. Yes. Okay. Can any one of you respond to me? Why would you not prefer to go with image 2 and image 1? Yes, please. Yes, please. Is there anyone who would like to go with image other than 3? Think on the connotation behind the pictures that have been posted on the screen. Yes, students should get employment, so you respected and so you went for image 3. But Preeti ma'am, I would like to just raise a query over here. Do our 100% student get the employment, or do you expect them to 100% get employment? Suppose I have a class of 120 with me passing out. 120 students will be expecting to go for employment or some kind of a job. What do you say? Others can also participate in this discussion, please, because we have to start with these basics, because we are forming our ground. Sima ma'am says basic concepts with practical skills which they can apply. Means you say, Sima ma'am, rightly you are coming on the track that one, you would like them to introduce with the concept, yes, and that too with practical aspect, they should be able to apply those concepts. Am I right, Sima ma'am? Yes. Preeti ma'am, I expect, but we will not find such percentage of employment, and this is what the reality I'm trying to point out. 101%. How would you interpret image 2? Yes, please. How would you interpret image 2? Is it not the aspect or what you call the attribute related to entrepreneurship? Yes, please. Don't you think that, yes, business or entrepreneurship? So when we talk of higher education, try to understand not only image 3, but we go with different concept, we go with different skill sets. What is that? One, certainly we go with the employment, and that the skill is employability. Simultaneously, second skill, what I was trying to point out in second image was that related to entrepreneurship. And entrepreneurship is also one of the skills that we try to inculcate among the students during his prowess or during his association with our institute or during his graduation or post-graduation. Now, it means a common consciousness we have formed here that we do not only aim for employment only. We also focus on entrepreneurship. Are you with me? Yes, say yes or no. Are you with me? Yes, entrepreneurship. Rajesh sir rightly pointed out me. Yes.
Please take your time. Please take liberty. You can unmute. We will go with the concept of agree to disagree. And I want you to interact with me. I want you to brainstorm with me. I want you to come out with your open views so that we'll try to get most of the things, and I shall be also able to learn so many things from you. Let us proceed further with the concept of that two types of, and third skill we cannot neglect, that simultaneously we focus on the life skills also, employability skills, entrepreneurship skills, and simultaneously what you call the life skills. Moving ahead, I just would like to give some kind of yes, please proceed. Please coordinate with me. Yes. A brisk activity, suppose we purchase a car and try to correlate this activity with our teaching learning in our classroom. If I purchase a brand new car and I hand over key to you, without knowing that whether you are able to drive or not, or whether you carry driving license or not, what is the possible end of your car driving? How can I expect? Let us check the possibility, and I want very detailed or very specific answer related to this. Again, I'm showing you what are the possibilities of ending your car driving. Image one. Try to interpret the image. Yes, anyone would like to? Please. Anyone would like to? What can you see on the screen, please? Driver is enjoying. Yes. What has happened to car? What has happened to car? Please come on. Accident, right? But what is the expression of a driver in a commanding position? Is he afraid of driving? No or yes? Simultaneously not. What about fellow passenger? What is happening? Yes, please. Those who are here, you can interact with me. What is happening? Afraid. It means one possibility is I am audacious driver. I am enthusiast. I am enjoying driving. Equally, as a teacher, I am enjoying my teaching. But what is the situation of the stakeholder? Angry, afraid? Yes or no? Try to attach the results with the possible results in the classroom when we are in a driving seat as teachers. Let us move on to the second image. What may happen? Suppose I'm a driver. Look at the result, second possible result. What is final result of this possibility? Yes, we have met an accident, completely wrapped up in bandage. And then I realize the importance of driving, learning to drive, that is driving skill, and try to know or try to read the book I'm reading in hospital bed. What is the title of the book? Driving Theory Test. Driving Theory Test. I think you are getting what exactly I'm trying to communicate to you. This image seems to be very simple, but my dear teachers, have not we practiced such things? If we are science teachers, majority of the practicals or many things which were supposed to be taught in the practical way, in the demonstration mode or in the simulation mode, we have explained them. We have taught them. For commerce student, we might have taught them concept of banking without taking them in a bank. We might have introduced them different types of accounts without them making to learn. So this particular concept, if we apply to the classroom scenario, brings to the reality of our classroom interactions, whether we are good drivers or whether we are good licensed driver. Look at the third image now. Try to interpret the third image and please respond in chat box. How do you comment on the third image? Yes. How do you comment on the third image, my friends? Yes. Satisfaction of driving. Did he meet any accident?
safe and smooth. Suman ma'am, thank you. Rajesh sir, thank you. Revealing fact, yes, satisfaction with proper skill. With proper skill. What do you think? What has made the third image as a successful driver? Yes, please. What has made no accident, no frown on the face? But what is the result? The result is the successful driving. Yes, successful driving. Can you please? Yes, skill faith. Preeti ma'am, thank you. Simultaneous, Rajesh sir, proper training and practical skills. Okay, Latika ma'am, skills. Please elaborate. You are coming on right time and I right track. I'm very happy. I'm very happy that you are coming with the expected responses. Yes, he's holding something in his hand that is driving license. How do you interpret confidence in learning? When do we get confidence in learning? When we know what to achieve, and that's why we are going to have a kind of a feedback from you. Feedback from you is remove that. Keep just aside. I need continuously open that to open. Yes. Now give your feedback on, and my expectation you can see on the screen. As a teacher, we are expecting something else, and as a student, he might be shooting with his pen to something else. To avoid this, now I'm providing. I would like you to request to open your notebook and fill in the sheet, fill in the table which I'm going to provide you on the screen. Please close that. I would like to shift slide. Continuously close and open. Yes, please. Move slide. Move slide. Next. Yes, please. Now see, you can see on the table. Are you able to see on the screen? Yes or no? Please respond. Yes, sir. Yes, please. Now take 2 minutes time. What is innovation teaching learning practices? Those who are here in the audience also would like to see. Now come to the column number 1. I want you to respond, and majority of you to respond. Yes, please. What is your faculty, whether you belong to science, commerce, management, engineering? Did you write down? Open chat box. Did you write down? Yes, science. Write down on sheet. Write down on paper. Yes, write down on paper. Kavita ma'am, Madhu ma'am, write down on paper. लिखा फर्स्ट आपने फैकल्टी का नाम लिखा आपने साइंस कॉमर्स जो कुछ है. Which degree program do you teach? Imagine one paper that you teach. Which degree program?
Sir, sorry to bother you. We are not in a position to hear you, sir. You are not audible. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. इकडे बसा जरा ते. हा सर इकडे बस.
Okay, dear participants, please respond now. Can you hear me now? Yes, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please. Now, as you are responding to me, I want you, all of you to, almost everyone to, please unmute and please discuss this particular table. So, one of the participants can take a lead. Now, faculty name, and simultaneously some of you can respond on chat box also. Did you understand what we are trying to get? I want you to fill in this table. Have you started filling this table? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. What about other participants? I can see 40. Yes. 40 brand ambassadors of their respective and respected institutions. Yes. Okay. Yes. Thank you very much. Can any one of you take a lead and tell me how did you start feeling? I want you to write the faculty. No. Come back. Yes. Yes. Can any one of you take a lead and start discussion? Yes. Any volunteer? Yes, please. Yes, sir. Can I? Yes, ma'am. Ma'am, you are most welcome. I have virtually clapped for you. Thank you, sir. Yes. My name is Dr. Mugdha Joshi. The faculty name is Faculty of Commerce and Management, under which I teach under Management Faculty for the program MBA. Okay. The papers taught by me are Business Communication and all other papers related to HR specialization. Select one now. Select one. Okay. So I can take a generic core subject, that is Human Resource Management. HRM you have selected and put it in third column, right? Yes, sir. Yes, I in third column. I believe that others are filling in the sheet. Ma'am, now move on to the fourth. Don't suggest a hypothetical. Just confess openly whatever teaching methods and resources, if any, you have used. Yes. Right, sir. So in teaching methods, I generally use a very basic method, that is PowerPoint presentations. Plus, I go for case study methods. The case studies related to core HR subjects, and also the role play method while teaching certain units such as collective bargaining and recruitment and selection. Ma'am, before we proceed to the next column, that is fifth column, Yes, shall I sir. lock your response 100%, or would you like to change your response after I ask you to fill in the next three columns? No, sir. I think you can lock it. I locked it. Okay. Yes. You selected the paper HRM. Okay. Right, sir. Right. Go to the next column. What is next column? Next is how you tested whether your expectations were matched or not. So we have comprehensive evaluation, sir, with the help of Give me a various minute. Sorry to interrupt you. How do you put in academic field? How do you put your expectations? No, I did not get it. How do you replace the word expectation? Expectation that students will be what students will be able to learn, right? Right. Suppose, for example, tell me one unit or one lesson. Say recruitment and selection. Recruitment and selection. So what did you expect from student to learn as a result of your teaching? Right. I got your point. Now I basically expect them to understand the core difference between recruitment and selection. I expect them to understand what are the various sources of recruitment. What is the proper understand, right? Yes, sir. Yes, sir. Next. I expect them to understand the proper method of selection. And consequently, I also expect them to understand the various retention strategies, because ultimately recruitment and selection is not the only part they are expected to understand. They're also expected to understand how to retain the good employees that they have through elaborate recruitment and selection process they have appointed. I have locked your responses here. Which skill do you call the same things that this is the skill set would you like to impart to your student out of this particular chapter? Basically, I would say their communication. Be brief.
Yeah, communication skills, sir. Okay, communication skills. Yes. But we were expecting, in previous column you said everything in related to understanding in terms of recruitment and selection, right? Right. Okay, go to the last column now, ma'am. And the last one is type of job or entrepreneurship expected. So I can expect that they would join the corporate, or they can start their own entrepreneurial activity by, say, starting with some placement agencies or training centers. They will get the job is accomplishment, right? Right, right. Come to how you tested whether your expectation. Which examination did you conduct before they complete this paper to check whether whatever skills you are expecting, how did you satisfy yourself that yes, these skills were successfully given and students have understood it? Right. So under CC parameter, I conducted the role play activity wherein I asked them to perform the mock interview session for the selection procedure. So therein I can understand whether they have developed required communication skills or not by giving them the roles of interviewer and interviewee. You stick to one point that you just wanted them to understand, right? Right. Don't you think that they should have learned to apply, learn to analyze, and learn to repeat? Because you are telling you are conducting examination based on application level of the content, application, and you are expecting them to go to the level of only understanding. But how would I know whether they have understood or not unless I check their application capability? Yes. So keep this question pending, and this question we are going to proceed with the further discussion. I must really thank you very much for your really whatever I was expecting. Yes. Thank you, sir. Yes, one more participant and coordinator simultaneously. Sir would like to add, because this is how I would like to make participative. Sir, actually, as per the guidelines of NEP, when we are going to teach any course, as per the guidelines of NEP, if you want to teach any course, then first of all, you have to tell them that what are the course outcome and course objective of paper which you are going to learn. And according to that, the skill will get changed. Okay. And the final output will be, after completion of their PG or UG, they will get job or they will become entrepreneur, or they can start their own research. Okay. So thank you very much. Others, are you with me? Yes or no? Is there anyone who would like to continue? Or shall I proceed? Yes, please. If chat box is open, I don't. Yes. Yes. Shall we proceed? Shall we proceed? This was the activity intentionally placed, and now I would like to proceed. I would like to proceed with the next thing. If this is being practiced meticulously, if we claim that yes, before I entered the class, I have ensured that I have aligned all these columns, this particular table completely with the requirement of the student, and simultaneously, if I have taken serious note of this table, then why should be this reality in India related to higher education? Let us go on. Let us go with the next data that I have for you. What is it? Now I would like to give you the reality of higher education in India and employment gap. Previously, I spent my time on the skills that we aim to impart, that is employability skills and entrepreneurship skills. Related to graduate employability skill, I cannot go with this or without this. India's Skill Report 2023 has come out with the bare reality that only 45.9% of Indian graduates are employable. First reality. Let us go back to technical education and professional education related to engineering graduates. NASSCOM's research report says that only 20% of the total fresh graduate students, and do you know the quantum of engineering graduates from India every year?
8 lakh plus. Out of 8 lakh plus fresh engineering graduates, NASSCOM report says that only 20% of our fresh graduates meet to the industry standards. And it means, and I am also going to tell the reasons. In the latter part of this report, it has been stated, the reason recruiter failed to recruit the fresh graduates because by the time they attempt to enter the industry, the skill set that they have acquired in colleges, they taught either become underskilled or what you call static or outdated. One more reality, AISH report, AISH report 2021, higher education enrollment shows that over 40 per million students are there in higher education. Look at demographic dividend we have in higher education, because already we are aiming for 50% of gross enrollment ratio in higher education, but we need to check one more concept. We know GER. Today I'm introducing to you EER also. If you go to United States of America, their gross enrollment ratio is above 94%. Because their ER, eligible enrollment ratio in higher education, is above 98%. And our GER, gross enrollment ratio, is approximately 37% like that. And right now we are aiming to induct 50% of the population, and still, although it is approximately at 37% of the total population, we have 40 millions. But the failure to meet the requirement of industry, or what we call industry academic gap, is identified as disconnection between academic learning and industry requirement. Now, when it comes to global platform, let us try to understand where do we stand in human capital development. It is, I have taken this statistic from World Bank report 2022. India ranks 132nd in human capital development. Look at the reality. And as far as employability is, employability hinges on skilling for AI, ML, cyber security, as well as soft skills like communication and problem solving. Now, why exactly is happening? My dear teacher friends, if you go back to the original draft of National Education Policy 2020, we have been told that the objectives of National NEP 2020 are multidisciplinary education, multiple entry, multiple exit, simultaneously 3-year degree, research-based degree, honor-based degree. But my dear teachers, one of the major objectives of National Education Policy 2020 has been neglected by us. National Education Policy aims to comply with Industry 4.0. I repeat, National Education Policy aims to comply with the Industry 4.0, and the reason is that emerging workforce dynamic go with the report from WEF, that is World Economic Forum, that 50% of Indian workforce require reskilling by 2030. If at all we have to comply with the requirement of what? Industry 4.0. Because what has happened, we have divided our students. We have identified different faculties like humanities faculties, social sciences, commerce and management, science and technology. But no faculty as such has remained untouched of digital transformation. And if we are not introducing such things, interdisciplinary things, along with the enhanced digital support to our students, it is going to be a partial what you call training to the students. Because let me cite example with one we are involved into, because I'm associated with, my team is associated with simultaneously content development and the subject combination, or what you call pools, making pools of major, minor, elective, SCEC, and simultaneously the other verticals and formula bucket. Now question rises, we need to ask questions, whatever from major subject, DSC, discipline specific core, discipline specific elective subjects, plus open elective or generic elective and skill enhancement course or ability enhancement course, how we have blended it.
My dear teachers, there's a logic that needs to be understood, because new education policy aims at providing enhanced employability and entrepreneurship skills. And recently, as I was telling you regarding content, in one of the universities, what they have done for the student of BA Economics or BSc Economics, they have introduced one of the papers in 4th semester, like introduction to blockchain, introduction to AI. And as an open elective, to be a student who is pursuing economics degree, he is introduced to the paper of statistics, introduction to statistics. Why? Because previously, for student who is going to pursue or complete BA economics, might have different skill set or different job. But now, there is a concept in economics, just I'm citing example like econometrics. And for econometrics, there is a scope for him for employment as an analyst, statistical, data mining, data analysis, but then related, and if he has to be skilled, to be employed in that particular area, he need to have skill set regarding the statistical tool. So the paper is interesting. Similar case, why the blockchain is introduced, because it goes with the concept of data and its related data mining and data analysis. And why computer as ability enhancement or technical enhancement? Because he has to digitally literate himself, so that practically he is able to handle or give responsibility, carry on responsibility. So if this is the reality in Indian context, what are the challenges of 21st century learners and teachers in employability? First, what is that skill gap? First of all, and these are based on the factual reports. In humanities and social sciences, major skill gap, whatever subjects we have prescribed, it is observed that digital literacy or digital handling, or what you call storytelling, ethical framework and global cultural adaptability has become a problem these days, hurdle, and it has resulted in reducing career options in content creation and cultural consultancy. Now, related to commerce and management, we are providing them education, but majority of us might have failed in providing them advanced financial modeling, fintech techniques, and leadership trends in commerce management, which are required to the existing and 21st century job requirement. It has resulted in what? Limited roles in high growth finance and management, and that's why students are not able to get the proper jobs. Related to science and technology, our students have been identified with the gaps in AI, ML, IoT, robotics, and renewable energy. Yes, we have introduced those papers. But those papers need to be aligned with the software or the trends that have been practiced or overnight developed in the industry, and we'll have to introduce students with those latest concepts. And that's why what has happened, if they have learned or acquainted with the generic concepts of AI or ML or IoT or robotics, it has resulted in lowering the employability in emerging tech-driven industries. So imagine that our student has completed a graduation. When he is inducted, we have to match him. And this is what point I'm trying to make is. And that's why, first of all, as a 21st century teacher, 21st century educator, as a 21st century syllabus framer, policy maker, first of all, we'll have to realign, because syllabus failed to integrate industry demanded skills in designing, thinking, coding, and entrepreneurship problems. Please note these keywords, and that's why it has resulted in lacking job readiness. Next is emphasis on theoretical knowledge, because in the slide which I had shown you, like car driving test, majority of the things, majority of the concepts have been theoretical, but major part theoretical, rather they have to be into practical and real world application. And based on it, limited industry exposure, and that's why they are able to feel the competitiveness of the market,
Then weaker professional networks and exposures. Yes, they communicate. They complete their courses, but when they complete, I'm going to give you certain examples, like Google and all. Give me some time, how they have come up. These are the problems, digital divide, like widening employability gap, rural, and then competitively driven and market oriented, because higher unemployment and skill development. Rather than focusing on this particular aspect, now I would like to move on to the challenges, first of all, that is, as teachers, the challenges that we face is limited integration. Yes, we have the limited IT infrastructure. The second, that commerce and management teacher may face the problem with advanced analytics and AI-driven tools. Science and technology teacher may also face the same what student is expected to do. Simultaneously, we have to play one role, is the research of research, teaching and mentorship. But the major thing I would like to focus rather than come down to one of the reports. The report prepared by Mona Khare from Center for Policy Research in Higher Education, National Institute of Educational Planning and Administration. There is an extensive report on graduate employment and sustainable employability skills in India. My dear teachers, I'm just citing you one table out of their survey. What are the expectations of employer from higher education in India? Look at one first point. Industry is expecting from us, first of all, to include practical experience in course. Second, include sector-specific work placement as an integral part of study program. I repeat, sector-specific. The third is provide industry experience to teaching faculty. Focus on the third point. It means they are talking about reskilling and upskilling of teachers also. Rather, take not only students, because we go for MOUs, we go for collaborations, we go for different say associations, and take our students. But simultaneously, report has come out that let us provide industry experience to teachers. Then making course more relevant to needs of the teachers, making industry personnel as a part of adjunct faculty, and then relationship between graduate and means mostly giving them hands-on experience either in the form of internship and these things. Ma'am, when I was asking you consistently, how did you ensure that whatever you taught and whatever you expected needs to come out systematically or needs to be checked? And that's why I would like to focus on this particular, what about our examination and evaluation parameters? Do our examination and evaluation parameters meet our expectation? Because mostly, if I keep on moving different institutions pan India, if I check, when I discuss with outcome-based education, what is the evaluation plan? Majority of them say, sir, at institutional level, we have framed a policy that one written test, one assignment, or one practical. My dear teachers, please rethink over this. Because evaluation parameters or evaluation tool needs to be aligned according to the requirement of outcome. Let me cite one example. Suppose ma'am was telling that communication skills was taking. She teaches communication skill. And one of the outcome I write, at the end of the course, my students will be able to speak in English. So accordingly, I taught. But as an examination, if I take their 70 marks examination, written examination, how would you comment on my evaluation plan? Yes, any one of you, please respond to me. Either in chat box or just unmute. Rajesh sir, I'm going to come down to your this thing, how to comply with industry needs in rural sector. This is very important question. Yes, please. Anyone?
I just would like to ask you, have a response from you. Suppose I have kept my outcome that my students will be able to speak in English as a result of teaching of communication skill paper, and I conducted written test for them. Have I given justice? Have I tested whether they have acquired the skill or not in real terms? I have tested them, but I have conducted written examination. Yes, please. No. Then it can better. Some of you, please please unmute. Who would like to? You can use Hindi. You can use your regional language. Yes. You can use English. Yes, please. Suman ma'am, Inder sir, you are giving answer. No, I want rather to give it elaborately in one or two sentences. Yes, please. Silence is golden. Yes, please. All dear participants, I'm waiting for your say. Good afternoon, sir. Yes, may I know who is on the other side? If we want to check the communication skill, then we cannot check the skill by taking the written test, actually, I think. Okay, then what do you think? Did I practice it rightly or wrongly? Please be clear. Yes, please. My opinion is that is wrong. It is wrong. What I should have done? What should have been my testing module? We should take like Viva or personal. We should ask the questions directly to the student and check that whether he or she is able to communicate in English or not. Absolutely. It means my testing tool should have been such that would have given student to opportunity to open his mouth, right, and speak loudly. Yes or no? So this is what it means. Based on this, we are going to conclude very extensively, because I'm going to tell you to revamp your complete teaching plan at the end of the session, and this is my exact outcome that I'm going to point out at the end of the day. Okay, sir. So let us move on to thank you very much, sir. Sir, please. Moving on to the next, that one generic method of conducting examinations. One, this is what the problem. Then inability to measure entrepreneurial competencies. So how can it be ensured? We are going to discuss. One. Then next, okay. I had told you that National NEP 2020 goes with the concept of matching the requirement of Industry 4.0. Within a minute, I shall give you overview that look at the era of 1780s. It is considered to be revolution of mechanization. Revolution of mechanization. Sudden revolution came up with the invention of steam engine, and the workforce required outside to the industry was according to the requirement of steam engine. So it was considered to be revolution, and certainly educational parameters were changed. Then after 100 years, what happened? After 100 years, what new revolution came up? And the new revolution is known as share. You can reshare. The file has got dropped. Share. Click on my presentation. Yes. So coming back, let us move on to Industry 2.0. Industry 2.0 came out with the concept. Sir, please go on clicking. 2.0, after 100 years approximately, there was a revolution of electrification, because the engines on electricity emerged and workforce was required according to the requirement of the machines. After 100 years, there was a revolution of automation.
because of that, there was during 1970s, there was a development of electronics and computers, and that is known as Industry 3.0. But now, what has happened? Not 100 years. Look at the pace of change. During 1980s, there was a concept of LPG, and there was offshoring of production to low-cost economies, and the concept of globalization came, and there was a industry, what you call 3.5. But now, today, we say that this is the era of digitalization, and that's why this is the era of data. This is the era of digitalization, and that's why now we have been introducing, or already we have introduced the papers like data analytics, artificial intelligence, and automation. And now our National Education Policy 2020 would like to comply to the requirement, and already developed countries have announced their new, look at the gap between what we are aiming at and what developed countries, they say the new revolution is revolution of personalization, Industry 5.0, because Industry 4.0 has led to Industry 5.0. Previously, there was a competition between man and man for employment, but now Revolution 5.0 has come out with the concept of what you call competition between man and machine. All of us know that AI has replaced human force, and there is a possibility that this day is not far away. Look at and try to analyze. I would like to say we are teaching, they are learning, but look at the traditional mode. That why this image I'm popping at you, think little bit. Our children, I have shown their heads differently as rectangle, triangle, pentagon, circle. What does it mean? Every child is different. Every child has his own different abilities. And these children, without classifying or bifurcating them, we try to train them with our predefined parameters and look at the end result. All productions are same. This image, for all we try to conduct, students of different capacities are being taught with the same parameters and they are evaluated with the same parameters. But if at all we have to make our students what you call holistic learner or holistic with his skills, knowledge, that is cognitive, behavioral, that is what he is able to do, and third is affective, what attitude he has been able to do. Means knowledge is mostly, cognitive skills are attributed in what you call the school, in classrooms. And to put it very simplistically, how we have strengthened his brain, how we have been able to strengthen his heart, and how we have been able to strengthen his head, what you call dimag, combination of dimag, dil or haat. And this holistic experience gives him to the concept of what you call the holistic learning experience. And that's why, ma'am, when you were telling me, you were repeatedly telling that they should understand. But from understanding, that is level 2, because say from remember to create, try to understand these 6 levels of Bloom's taxonomy. First 3 are lower order thinking skills. That is remember, understand, and apply. And analyze, evaluate, create, they are considered to be higher order skills. And if at all only we focus on understanding, how can we expect them that they will be able to analyze, evaluate, and create? And so these learning outcomes, which I told you, what they are able to understand, expected to know, and what they are able to do, I would like to just focus on your ability. Now I am moving very important part of this session, that is what after bearing realities, what needs to be done. My dear teachers, we can go with the concept. Look at the titles of the column. One stream, industry or area, what is probable area in future for our students for employment. What is the skill required to them? What is the present skill gap among the students? What is the relevant skill courses available to them? And what is industry feedback? Let us move on to, sir, not able to click. Faculty wise, if we take a note to this table, please click.
Let me go back to Faculty of Humanities. Industry or area of employment at present day mostly is related to media and communication for our future trend I'm suggesting. That is for humanities. Now, what are the skill set required? They need to be creative. Then they should be able to write, because do you know what is the quantum of content? Recently, I took review at global level, non-literary, just translations. Non-literary translation quantum, market quantum at global level is 67,000 crore in a year. It means if they are able to write, research, digital media literacy, these are the skills required for skill set required for humanity student, which need to be added in our curriculum. And why? Exactly opposite is the skill gap. What is that? Our humanities faculty students are not introduced formally to the digital skills and research skills. And that's why we need to go for digital literacy courses and digital methodology. And we can ensure this with the help of our alumni or industry, but with the help of collaboration, Now come to the next part, that is commerce and management. Yes, we have skill set like at present we have banking, finance, but simultaneously look at the relevant skill set. Accounting software, the word like fintech. How many of our students are well versed with fin technology or finance technology? If they are introduced, commerce students are introduced with the finance related technology, account related technology, analytics related technology related to commerce and management, certainly industry is going to recommend them for accounting and tax trading programs. Now basically for the faculty like science, the concept, what you call, look at the key lab techniques, analytical tools. Now all of you like biotechnology and pharma, but if I take biotechnology and pharma, look at the relevant skill set, laboratories and bioinformatics, and simultaneously green science, green energy, such kinds of concept. And our students lack, it has been identified that they lack in practical lab skills, weak instrumentation handling. And if we refer to like technology, same thing will also be happening, like IT firm and stack management. So, my dear teachers, what is the practical solution for this? The practical solution for this is hidden in our classroom activity, one related to curriculum development and simultaneously our teaching, learning and evaluation. Next, evaluation. Now, go next. Go next. I would like to move on to my major slide that I would like to extend because I don't want to consume much of your time. So I would like to focus on next slide. What needs to be in curriculum and learning objectives? Major say of this session is one. Go on clicking one. First of all, before we develop our curriculum, or before we teach or before we evaluate our student, first of all, identify the future job or employment in that particular subject or paper. Enlist minimum 5 to 10 possible vacancies or possible requirement of the industry and align your curriculum, align your pedagogies and align your teaching methodologies, simultaneously evaluation according to the requirement of the job, present job and the possible future job. Next, first, know your student first. Know your student means try to understand to which level, cognitive level they are. And based on that, decide your teaching strategy. Next is factual learning outcomes. We see that we write outcomes, but they are high and mighty. They may not be attainable. So what exactly is the level of your student? What exactly you can serve them or give them practically, and how you can go with how we can cater to their requirement and how we can attend them. Simultaneously, if it is not a part of your formal curriculum,
you can proceed with add-on value addition ecosystem. And there you stand criterion 1 of NAC, that is value-added courses and value-added courses, add-on courses and certificate courses. So this ecosystem, like combination and requirement, needs to be given simultaneously. We need to revamp completely. And my next slide is related to completely changed platform or teaching plan, which I'm going to display, that is hands-on and all. But I would like to focus on the point. Next, sir. Next. Yes. Well, next. I would like to focus on teaching plan much. Sir, go on clicking. I'm skipping some of the slides. Major, I would like to focus on. Sir, please click now. I'm waiting for major thing because already time has lapsed. So I would like to focus on one of the major aspects. That is, no, skip this also. Keep this also. Yes. Skip this also. Next. Skip this also. Skip this also. Skip this also. Next. Next slide. Next slides. Next. I'm coming to that slide. Next slide. Yes. Now, usually, the last major point I would like to say is that usually our teaching plans are like this. Click once. Month or time and topic. Yes or no? Whatever I pinpointed can be revamped. My dear teachers, hereinafter when you prepare your teaching plan, see, we ask question in teaching plan, what I'm going to teach, 1. Secondly, how I'm going to teach or how I teach and to whom I'm teaching and what I do expect. So put it on paper in the column form. First of all, I want you traditional manner, but first of all, same thing, like duration you are going to consume and duration you are going to consume or week or month. This is first column. Okay, I accepted. Next, your unit or topic. Okay, this is traditional part. But what comes next? First of all, my dear teachers, don't rely on borrowed outcomes. Before you write borrowed outcome, after reading units, try to identify some skills that are factually been reflected in the content of that unit. Miss, please note, from unit, identify skills. And after identification of skills, you prepare your outcome. Means you correlate your outcome of that particular subject, write your outcome next to your unit in teaching plan only. After writing, what is outcome? What students have been able to learn as a result of teaching. So to get that result, you need to align or change or practice your teaching method according to that. So write down in teaching plan only which teaching method you are going to use. So first of all, from unit, you are extracting skills. From extracting skills, you are correlating your unit to learning outcome, from unit learning outcome to pedagogies, and after pedagogies, as a teacher, what role you are going to play as a teacher. Because traditionally, our teacher was dictator at the center of the class. He used to dictate. But UGC's learning outcome-based curricular framework has also mentioned, and these days 21st century skill set requirement has changed the teacher's role. And what is said, we are not dictator now. We are not at the center. We are guide by sight. We are mentors. We are facilitators. We are demonstrators. And that's why the concept of participation, that's why concept of collaboration naturally is practiced if we induct this particular part as mandatory requirement of our teaching plan. Because we consciously decide our teaching strategy as a role, what I'm going to do in the class. But what about student?
Can't we expect? Yes. Teaching plan, next column is going to be learner's responsibility, or what student is going to do in your class. Sit idly? No. If I have to teach in my role, student participative role, collaboration role is being planned. And if we plan, then naturally it becomes problem solving learning. Naturally, it becomes collaborative learning. Naturally, it becomes peer learning. And the next part is, next column I expect in your teaching plan is, decide your evaluation tool to check your attainment correctly. If you are going to check right factual skill, you are going to decide your outcome properly, you are going to align your teaching properly, you are going to play your role properly, you are going to make your student to play their responsibility properly, and simultaneously evaluation tools, whether you are going to go for a written test, oral test, practicals, simulation, what type of evaluation, and that is going to give the justice. I'm trying to map all the requirements of classroom practices in single teaching plan. And that's why, to make it technology assisted, I request you to make compulsorily ICT integration as a part of your teaching plan only. Because what can be ICT integration? And for what? ICT integration is meant for, ICT integration is meant for one, preparing, next. ICT integration is mostly for one, creation of content, right? Creation of, let it be MOOC or let it be on any platform. For creating, what are the tools? I'm going to tell you. But for creating, yes, tools we can. But what about the content? I'm going to suggest you certain things, how we can go with the content, because I'm day to day, I'm into it. Simultaneously, for transformation or for communication, and then third is for database management, So all these experiential learning, innovative pedagogies, I'm skipping, but I'm focusing mainly on the last part. Next. Focusing on the last part, because we started late, I have to skip. Next. The most important part, read how do technology support teaching learning practices. You have listened so many lectures on creation of MOOC, but for content, usually what is seen is that these days ChatGPT is being used. But to make you aware, I have had paid heavy subscription, and I tried to collect the data or information. Out of my experimentation, I would like to give you alert that authenticity of content, specifically with statistical and mathematical subjects or technical subjects, you cannot rely on. One, then synchronization of the data to these AI tools is not, many a times it is not updated. So we may not rely on those particular things, but it may be supportive or assistive for our own content creation. So I would like, first of all, you to learn the way to give the prompt or way to prepare algorithm to procure information from digital resources. I repeat, way to algorithm, because these days Gemini is said simultaneously. But now, these days, all of you know that if you create a content and if you check on any plagiarism check software, 100% your AI content is generated. As a last 3 or 4 point informative, I would like you to make yourself versed with AI supported tool or software, Stealth Writer. I repeat, name of the software, Stealth Writer. Stealth Writer and is one of there are many software, but software like Stealth Writer help you to humanize your AI generated content. I repeat, the software like Stealth Writer is AI based against software, because whatever
whatever algorithm checkpoints are being followed to trap us or to identify our AI generated content is being nullified or minimized by, again, solution is given by AI only, like software like Stiltwriter. And I have practiced it myself with number of documents that when we try to we try to process that data. Many of you use the paraphrasing software, but these days paraphrasing software content is also detected as AI processed data by the software like Turnitin. So I would like to suggest that when you are developing content, see to it that blindly do not copy and paste or do not rely on the AI generated content, but before that decide your strategy, what type of content, what level of content, and to what extent, and how much varied content you want, and convert it into the form of new word, that is prompt. These prompts have come out as some of the short-term courses now, how to write proper prompts. And there is a 6 days, 7 days, say workshop, online workshop, they teach you how to write proper or correct prompt to generate or to procure the content from these AI tools. So the software humanized software can help you to again go forward. And yesterday you might have learned about the software like Canva, which help to process and all. Tomorrow, because of paucity of time, I'm rather not focusing, but tomorrow I'm going to give you some more software and practical hands-on experience related to upskilling your ICT skills. But till then, my intention was, it was not wastage of time, but to change your teaching plan. This was the major intention, to make or prepare your teaching plan according to the requirement of 21st century learner. So thank you very much. And if I'm too lengthy, I apologize and I hand over to the organizers. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this inspiring and interactive session. Moving forward, I would like to request Mr. Vineet Kala from Institute of Forensic Science, Mumbai, give the vote of thanks for this session. Please, sir. Good evening, everyone. Distinguished speaker, Professor Dr. Deepak Nanavare, sir, organizing team, and dear participants. On behalf of the organizing committee, I am honored to extend a heartfelt vote of thanks to all those who have contributed to the success of today's module on locating learning objectives and outcomes to lead through technology. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to our esteemed speaker, Professor Dr. Deepak Nanavare, sir. Your in-depth discussion on aligning learning objectives with technology-driven teaching methodologies have provided us with a clear path forward. The strategies presented will undoubtedly help us better integrate technology into our educational framework and enhance students' outcomes. Sir has covered characterization of learning outcomes, ice-breaking activities and report, education and employability gaps, 21st learners and teachers' employability and entrepreneurship, mismatch between syllabus and industrial requirements, challenges for teachers across India, balancing research and mentorship. Then Sir has also covered outdated assessment models and has touched upon first, second, third generation revolution. And currently we are facing fifth revolution. Sir has also touched upon Bloom's taxonomy, learning outcomes, and also have gone through collecting industrial needs and identification of future jobs. That is essential part, right? And with this, we can design course outcome and objectives. Further, Sir has also touched upon importance of skill courses,
Next, and sir has focused on designing of teaching plan very well. And also teachers are also like learners like us have to add innovative pedagogies to enhance skills and learning of students or learners. Now, sir has also mentioned one tool, StillWriter, and for humanizing AI content. Now it can be work as both ways. Also, sir, one more point from my side, tools and techniques are rapidly evolving at neck-breaking speed. And currently, we are facing artificial generative contents like intelligence. Now, there was an announcement by US government they are initiating with artificial supreme intelligence, like from Project Stargate. So we are actually lagging very behind as India. Okay, so further, a special thanks to organizing team of Dr. Homi Bhabha State University and Changu Kana Thakur Panvel Autonomous College, whose tireless efforts and dedication made this event possible. From planning to execution, your hard work behind the scenes has ensured everything ran smoothly and efficiently. We also owe a great deal of appreciation to our participants, whose engagement and enthusiasm throughout the program were evident. Your thoughtful questions and discussion have enriched the conversations, and we hope you leave today with a deeper understanding of the subject. Lastly, I would like to convey our sincere thanks to everyone involved in making this module a success. Your presence, contribution, and commitment to learning have made this module an enriching experience for all. We hope that you will carry forward knowledge and insights gained here today into your work. Thank you once again. Good evening, everyone. If you have any questions, doubt, you can ask to this. So I would like to ask one question. Yeah, ma'am, please feel free. Yeah. You might find this question little, I don't know, rude is a correct word or not, sir. But frankly speaking, I very sincerely feel that when we talk about MBA admissions, the CET score that you need to get enrolled for any MBA institution or for MBA course as such is non-zero score. So when we talk about gap between the the graduates and their employability abilities and everything, is it not the factor that we should be considering to put a strict benchmark on quality of students to be admitted for professional courses? You have raised very serious question, ma'am. This is a part of policy, but this is a part of policy. Whatever you say, there is a truth in this. When right? student scoring 2 and 3 marks, if yes. he is eligible to get enrolled for the courses like MBA, how we will be able to maintain the quality and the standard of education, irrespective of lot of efforts put in by the faculty? The reality you have pointed out, but this is we will certainly, or we can certainly raise this issue to the policymakers, but simultaneously at our level, what is in our hand, what is in institutional parameters or institutional level solution for this. There is a concept of what you call bridging the gap. What is this bridging the gap concept? But so we need to understand students' intellectual capacity, ability as well, while bridging the gap also. Yes, and that's why now say if entrant is like that, to bridge a gap, these policymakers have expected from us as an institutional curriculum delivery mechanism, we have to run a bridge course. And that's why AICT has you run AICT approved course, right? AICT suggested. Right. What is the intention? To give them rather basics of what they are expected to learn, and through bridging course, you are trying to upskill or uplift themselves to learn whatever you are going to teach in the latter part and in the academics. Likewise, not entry, madam. After they finish formal degree from your institution, and when they are ready to go to the industry, there is also bridge course. This is called finishing bridge course, basically. Finishing
are being expected to be delivered to the students at the end. That is entry level bridge course for the industry. So right, whatever feasibly or practically is in our hand, that solution I'm going to suggest. Now, please do not take these words on record, because I basically come from different part of Maharashtra. But I have visited some institutions and I have interacted with the teachers. There I have come to know the reality. You are talking of the quality amount of quantum of marks. Right. I'm telling you that even those who are entering at the higher education, they are not even are able to write one proper sentence. Absolutely. That is what my concern is, sir. Like, by giving bridging course, we cannot teach fish to climb the tree. If a student is going to be good in agricultural sector, why we are allowing him, based on his low score, to get enrolled for the MBA? That's why pre-admission counseling, one. Right. Then counseling, career counseling, one, pre-admission counseling, career counseling, goal setting, and bridge courses. These are the possible solutions so that students well in advance become aware about his area or what is cake. All of miss, I don't want to bypass or I don't want to generalize the thing, but all of us know in 3 Idiots what is shown in 3 Idiots. मैं तो बनना ये था गधा फोटोग्राफर बनना चाहता और बनने के लिए आया इंजीनियर बनने के लिए आया. Right. Very true, sir. So try to understand what has been tried to communicated to us through that film. So this consciousness was given in the film by his peer, by his colleague, right, who was ahead of time, right? Correct. Venture. But now, as a part of formal policymaker, pre-admission counseling, proper career counseling, goal setting, and most important, if such again student comes to you, whatever is given, it should not be what you call a ritual, but the bridge courses are the best solution to give them basics of what they are needed to be done. And simultaneously, if you are really serious about their employment also, before they to the final or outgoing student, you conduct industry bridge course also, so that they acquire at least primary skill set for the required for the industry. This is what I think you think that this can be the practical solution for that. Right, sir. Thank you so you much. Raised a very serious question. It is a serious question, sir, because see, taking forward a point ahead, I know there is time constraint, but if I'm by career counseling, by a proper counseling, I'm not giving admission to a student, there are 10 other institutes standing in the line offering him the admission. So he will not take admission at my college or my institute, will go to other institutes. So the problem doesn't get resolved. And mostly student come, student learn, we teach, we evaluate, we give them degree, but this chalta hai concept has to be given, including myself. This applies including myself, first me and then others. Yes. Absolutely. Thank you so much. Any further question? Either possibilities, no question means. Thank you so much, sir. Dear participants, we hope you all are enjoying all the sessions of Faculty Development Program. Tomorrow on 23rd of January, we will commence our morning session from sharp 10 a.m. On this note, I announce the end of today's schedule. Once again, thank you so much all for your active participation. Thanks. Participants, the attendance link has been shared with you. So the link will be available for 15 minutes. Just fill the form.